तो आज सर से पूछेंगे, सर हाफ बॉइल्ड सब्जी तो खाने दे दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम वाला वो फंडा है ना, मतलब भूख लगती है तो आप हाफ बॉइल्ड सब्जियां तो भी खा सकते हैं, मतलब सिर्फ ब्लांच की हो, पर कच्चा सैलेड कितना खाओगे, मतलब बोर हो गए हैं। और फ्रूट्स में भी इतने लिमिटेड मिल रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ अनार अच्छा आ रहा है और एप्पल अच्छा आ रहा है, कुछ भी उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम तो जा रही है। आज थोड़ा सा लो फील भी कर रही हूँ एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हाँ डॉक्टर मैम का सवाल है। नहीं, सवाल नहीं है मेरा। मैं नीता मैम से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि वो जो कह रही है ना स्प्राउट्स वगैरह खाने से उनको और भूख लग रही है, तो व्हाट यू कैन डू नीता मैम, टेक 1/4 glass of honey, add water and drink it. नहीं लगेगी आपको। I know ma'am, I Trust know. me. Pradeep sir told us so many times, but I hate honey. Oh. Because of drinking that juice, I don't want more honey. मतलब अब बोर हो गई हूँ उससे मैं एकदम। 21 शिकंजी days. पीजिए मैम। शिकंजी then शिकंजी is the other option. But sir asked not to add any salt or sugar to anything, no? That is why I'm keeping my mouth empty. क्या कर सकती हूँ, पर ठीक है, 1-2 दिन में शायद और फ्रूट्स मिल जाए। आज भी भेजी हूँ ड्राइवर को पपाया वगैरह ढूंढने के लिए। और साइकोलॉजिकली नीड भी हो जाती है हमको कुक वाली चीजें खाने की ना, साइकोलॉजिकली नीड भी हो जाती है। तो ठीक है, सर कह रहे हैं तो अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। जूसेस भी 2 टाइम ले रही हूँ, 1 टाइम में कोकोनट वाटर ले रही हूँ, पर जूसेस भी कितनी देर चलते हैं यार, ओनली हाफ एन आवर 1 आवर बस। राइट। हो सकता है किसी को नहीं तकलीफ हो रही हो, मैं ही शायद ज्यादा अंदर फील कर रही हूँ, मुझे नहीं मालूम। ऐसा नहीं है मैम, वो सिस्टम को आदत नहीं हुआ है ना। हाँ। इसलिए एक बार सिस्टम को आदत हो जाएगा ना, फिर ऐसा नहीं होगा। मैं आपको एक उसके लिए ऑप्शन दूं क्या? हाँ दीजिए ना। देखिए, आप पालक लीजिए, पुदीना लीजिए, समार लीजिए, अदरक लीजिए, कड़ी पत्ता लीजिए, नींबू लीजिए, ब्लैक सॉल्ट लीजिए, सेंधा नमक लीजिए और थोड़ा सा गुड़ लीजिए। मिक्सी में चलाइए उसको, ठीक है, वाटर ऐड करिए, उसका जूस निकालिए। ओके, अच्छा, चलिए, अच्छा आपने बताया सारे वेजिटेबल्स विद जैगरी। तो सर तो कह रहे हैं नो शुगर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर। Yes, somebody was saying something. Let it continue. Once it finishes, I will speak. Continue, Ritu ji. थैंक यू सो मच सर। तो लीफी वेजिटेबल्स ही आपको लेने के हैं मैम। तो आप पालक ले सकती हैं, समार ले सकती हैं, पुदीना ले सकती हैं, कड़ी पत्ता ले सकती हैं, थोड़ा सा अदरक लीजिए और नींबू लीजिए, उसमें गुड़ डालिए, सेंधा नमक डालिए, काला नमक डालिए, पानी डालिए, मिक्सी में चला लीजिए और उसका जूस निकाल लीजिए। वो पीजिए आप 2-3 ग्लास। आप दिन भर कुछ भी नहीं खाओगी तो भी चलेगा, आपका काम हो जाएगा। तो आप गुड़ डालने के लिए बोल रही हैं, गुड़ ना, जैगरी? जी 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 जी। सर वी आर शेयरिंग रेसिपीज बिकॉज वी फील हंगर। Yes, madam. Yes, it is good. Share. बस आज के लिए फिलहाल तो इतना ही। हाँ बस। I'll look for more recipes and if you permit, I'll definitely share. Sure. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. YouTube चैनल में परन बोल रहे हैं कि चैट डिसेबल्ड है। तुम तो बोले कि मैंने खोल दिया, देख लो परन तुम। खेम जी का मैसेज है मुझे। Yes sir. So how was the Mauna, friends? बहुत अच्छा लगा, सुपर्ब सर। Enjoyed. So you continued the Mauna, madam? No sir, I have lots of work to do. So how can I keep Mauna? Okay. One day you were in Mauna? No, 2 days. 2 days मैंने किया, अभी मैं और कंटिन्यू नहीं करूंगी करके ऐसा मैंने सोचा। और कंटिन्यू मतलब today there is no need of Mauna. नहीं तो दोनों दिन किया सर। उस समय
परसों I was asking for अपडेट का हो गया था, कल तो थोड़ी देर के लिए मैंने बात किया था, 2-3 sentences. Okay. So, friends, let us begin the meditation. Prepare yourself. First, we will do meditation and then we'll have a discussion. So, drink some water, prepare yourself, close your eyes, relax. Let's start the meditation.
Mm-hmm.
Final 10 seconds.
Gently place your hands on your eyes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. You may slowly open your eyes whenever you are ready and immediately drink water. Thank you, sir. Thank you, sir. So, okay, friends, first we will discuss how was your 2 days Mauna, and we'll discuss about the diet and what you will be doing for the following week. So we'll just touch base upon the aspects of the retreat so far. फ्रेंड्स, आप लोगों को जो 2 दिन मौन रहे हैं, सर वो कंप्यूटर साउंड तो आप लोगों ने जो 2 दिन मौन रहे हैं, आपको जो फील हुआ है वो सर जानना चाह रहे हैं। सर माइंडफुल तो बहुत लगा। एक क्वेश्चन था सर मेरा, पूछ सकती हूँ? Yes, yes. सर आपने कहा था ना स्काई को स्टेयर करने के लिए, गेज करने के लिए Spend time in nature, yes, हाँ, in the night. हाँ, तो सर मैंने कल किया था 20-25 minutes. After that, sir, I was feeling very lonely and I wanted to cry after gazing the skies. So you should cry. I didn't. That's okay. That's you are missing your sweet home. So maybe that's the tears. Okay. Okay. But that's okay. The first time you see, you feel tears. But you see the second time, the third time, then you feel the strength also that you are not alone. Okay, sir, I will do regularly. At least Yes. 20 minutes I will do. No, it's not necessary that you have to do every day, but that's a way to be with yourself. Yes, sir. 2-3 times in a week. We all should do. Whenever you feel. I used to do this practice in my childhood days. In my childhood, sometimes I feel nobody understands me. So I used to go on the top of the terrace and I used to look into the stars and I used to look into the moon and I used to feel that they are understanding. So right from my childhood, I always felt that I'm not like other people. I can realize that, like, I'm not like other people. I was a little bit sensitive, very sensitive, and I don't understand why people behave like that, why people behave in a certain way. So that was the time I used to gaze into the sky, and I used to feel a lot of warmth. Now I understand, but in my childhood days, it was just a way for me to feel blissful and happy. Right? And I think whenever I used to feel a little lonely, I used to gaze into the stars. And the moment I gaze into the stars, then naturally the joy comes. For no reason, the joy comes. The joy comes that you are not alone, right? So when you feel that you are not alone, there is no separation. Then there is a lot of joy in your heart, because when your heart feels pain whenever there is separation. But in oneness, your heart is full of bliss. Okay, madam. Yes. Okay. Yes, Sarlaji.
और किसी को हाँ। एक्सपीरियंस बताना हो तो हैंड्स रेज करते हैं। मेरा नमस्ते सर, नमस्ते तो मैम। बहुत अच्छा हुआ, मेरा भी मौन 1.5 दिन का हुआ। बहुत अच्छा, मेरे को कुछ बोलना पड़ा पहले दिन, तो वो कल पूरा एकदम, और बहुत ही अच्छा, और ध्यान भी बहुत अच्छा हुआ, और माइंडफुलनेस भी इसमें बहुत अच्छा। मौन रहने से एक तो अलग एनर्जी मिलती है, ये तो बहुत ही अच्छी है। वही बहुत थैंक यू। मैं लाइम मधु वाटर का भी की थी 7 दिन सर, उसमें एक जरा सा भूख नहीं लगता है, कुछ नहीं, खाली वही, और जूस नहीं, और पानी उसी के साथ। और 74 इयर्स रनिंग हूँ मैं, लेकिन एक जरा सी भूख और कुछ नहीं, एनर्जी भी उतनी ही लगी। तो इस बार भी 1 वीक वैसे ही करना है क्या? नेक्स्ट वीक। Next week. Yeah, next week. बहुत So बहुत एनर्जी। this week also you can practice. It's all your choice. This week is all raw diet, raw foods. रॉ फूड्स। Yes. थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। See, in Mauna, what happens? Your fifth chakra, right? Your fifth chakra is Vishuddhi. So the more you practice Mauna, the more your fifth chakra comes into balance. So for the people who have excessive, that means they keep speaking too much. So for those people, it's an opportunity to introspect and see whether it is necessary or not. So this practice of Mauna helps them to introspect that they are speaking too much. So that comes into balance. And for the people who have deficient energy, so that means they don't express. So for the people who don't express their emotions, their feelings, they keep everything towards themselves. So then also it's a fifth chakra block. So it becomes deficient energy. So those people, if they practice Mauna, then a lot of emotions come during Mauna. A lot of all the pent up emotions start coming up. They feel very sensitive. They feel like crying, and there's a lot of introspection happens. So Mauna is a very good spiritual practice which directly helps your throat chakra. And you have to understand the lower 3 chakras are the physical aspect, and the heart is the balancing chakra, and the higher chakras are the spiritual aspect. So here you start with the truth. So you use your throat chakra to always express the truth. And also the authenticity is expressed in the throat chakra. So Mauna is a very important spiritual practice. And in my retreats, the Mauna is on a different level. They don't speak not only to anybody, also their mobile phones are confiscated. So they have absolutely no access to mobiles. And they're not supposed to have eye contact also. I think I told you before. They're not supposed to have eye contact with any humans, because during this intense Mauna, they will be going through a lot of emotions. And what happens if they have an eye contact? They start throwing that emotions on the other people energetically. Okay. So I want to tell you some interesting, funny experiences during Mauna. What happens? Like, especially if you're in intense Mauna, and on top of it, 12 hours of meditation and 8 hours of mindfulness, nobody to speak to, nowhere to go, you cannot escape. And also in my retreat, you're not allowed to read books. No spiritual books also in this retreat. In my physical retreat, you're not allowed to read even books also. So you cannot divert yourself. You cannot read books, you cannot speak to anybody, you cannot see anybody, you cannot look into your mobile phone. The only thing you can do is close your eyes, meditation, or open your eyes, mindfulness. That's all. And mindfulness also, that too with the nature. Always look into the sky, look into the trees, look into the birds, or walking, mindful walking. So what happens? There is no other choice other than to face your own truth. There is no other choice other than to face your real self, true self. So all the frozen, pent-up emotions right from your childhood comes out very naturally. Even the inner child work, the past life memories, everything comes to the surface. And sometimes people who are very gentle, very calm, they also start becoming a little violent also. Very randomly it happens, but just for one day or something.
So there was one of these participants from UK, very soft spoken, and so he suddenly got angry. He got angry on me. Because of me, he has to go through all those things. So he was looking for me so that he can express his anger. And that day, I was guided not to, I don't know, for some reason, I skipped this regular common session. So I skipped that regular meditations and let Navneet go. I don't know, this was my guidance. So I let Navneet go for all the meditations. And I was doing on some other administration work. So the whole day he was having so much anger that way he wants to see me, and if he sees me, he wants to hit me. Like, because of you, that all these things I'm going through. So he's literally looking to hit me. And I didn't knew this. So the next day I went, he was in tears. He was like totally shaken. He was in tears. Then he wrote on a piece of paper and gave it to me that you have impacted my life so much. And I'm absolutely shocked and stunned that the whole day yesterday you were not visible to me, and now I understand the invisible master is also there in this process. So then when he came out of the Mauna, he said that it was so surprised that he couldn't find me the whole day. That how did you plan that what I was going inside? How did you know? I said I didn't plan anything. It was just the way it is. I just went with the flow. So, and it was a great shock for him because he always thought he's a very calm, very composed guy. And there was so much anger on that particular day. So I told him it is quite natural. You will get angry because his anger is that he cannot live an authentic life all this while. And that anger gets diverted to somebody else. So that's why I say no eye contact also. Because just imagine you are going through so much of boiling up and it's coming out in this process. So Mauna brings up a lot of cleansing, especially emotional cleansing, because your throat chakra is again connected to your second chakra, your emotions. So this coming weekend, again, we'll be practicing Mauna. So I'll be giving you some tips so that you can practice it a little more intensely. Okay. सर अभी फरवरी में मैंने 11 days का किया था मौना, तब भी सर मैं बहुत इमोशनली डिस्टर्ब थी, मतलब छोटी छोटी बात पे रोना आ रहा था मुझे, जबकि ऐसे बहुत स्ट्रांग हूँ. तो yes, तब भी क्लींजिंग ही है, यही सोचे. Yes, of course. And also there was another girl from Vietnam, right? And it was a 15 days program. We started the Mauna on the 3rd day, from the 3rd day till the 14th day. So almost like for 11, 12 days. Every day she was crying continuously from morning till evening. And it's in Pyramid Valley, right? So she used to sit in front of the Buddha statue near the entrance, and she used to cry, and she used to sit near the pond, and she used to cry. And this management staff were a little bit worried. The security staff and management staff, they started coming. I said, why this guy, that to a foreign lady coming to India and then crying continuously? Is she crying because she's not having food, or is she missing the family? They were not understanding. And also they were worried, like, what if the girl jumps into the pond because she's crying so much, she might do something. I told her, no, don't worry, let her cry. Because whenever you see the water bodies also helps us to help you to cleanse all your emotions. So she was sitting in front of the pond and in front of the Buddha statue and crying and crying and crying. And towards the end, she was like butterfly. All her life tears went away. She was literally like a butterfly. So this experience also happens. So crying is also a way of letting your emotions cleanse. And one thing about emotions is you should never suppress your emotions. Any emotions, whether it is positive, negative, or any emotions, you should not suppress it. You should never suppress your emotions. So you should always let it flow, but
don't react to the emotions. Because in mauna, in silence, you cannot react, right? So what happens? You let the emotions flow, whether it is anger, jealousy, hatred, whatever it is. You let it flow, but still witness it in mindfulness. So when you witness your emotions, then naturally the same emotions transforms into your strength. Okay. Yeah, you can translate so far, madam. It's Yes, sir. from the beginning. हाँ, तो सर ने कहा कि मैं मौन रखने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि फिर चक्रा जो हमारा विशुद्धि चक्रा है वो बैलेंस होता है। जिनके में यहाँ पर एनर्जी ज्यादा होती है उनके लिए भी बहुत जरूरी है, और वो इंट्रोस्पेक्शन करके अपने इस एनर्जी को कम कर पाते हैं मौना के द्वारा। और क्योंकि जो जिनके पास एक्सेसिव होती है वो बहुत ज्यादा बात करते हैं, तो वो अपने को इंट्रोस्पेक्शन करें और मौना रहें। और जिनके में एनर्जी कम होती है विशुद्धि चक्रा में, अर्थात वो अपने एक्सप्रेशन अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, उनके में वो कमी होती है, तो वो मौना करे। ये दोनों एक्सेसिव हो या डेफिशिएंट हो एनर्जी, इससे बैलेंस होती है। इस समय सबसे ज्यादा इमोशंस हमारे बाहर आते हैं। आपको अपने आत्मनिरीक्षण करना है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। हमारे नीचे के तीनों चक्र हमारे लोअर चक्र हैं। विशुद्धि चक्र हमारा ऑथेंटिक और ट्रुथ बोलने का है, और हार्ट और उसके ऊपर का चक्र हमारे हायर चक्रास होते हैं। मैं अपने रिट्रीट में मेडिटेशन के साथ ये भी कराता हूँ मौन, पर वो इंटेंस रूप से होता है। वहां पर बिल्कुल भी एक दूसरे को लोग नहीं देख पाते हैं, और बुक्स भी उनको नहीं देता हूँ। इसके कारण बहुत सारे इमोशंस उनके बाहर आते हैं, और एक दूसरे से मिलने के लिए भी मैं इसलिए मना करता हूँ क्योंकि जब यदि वो मौन रहेंगे और इमोशंस बाहर आएंगे तो वो अपने इमोशंस दूसरे के ऊपर फेंकेंगे। इसलिए उन लोग को आपस में मिलना भी मना रहता है। घंटों मेडिटेशन और घंटों माइंडफुलनेस के साथ उनको मैं बुक्स भी प्रोवाइड नहीं कराता हूँ, बात भी नहीं करते हैं, देखते भी वो सिर्फ नेचर को है, मतलब इंसान को नहीं दिखता है, सिर्फ नेचर को ही दिखता है। और माइंडफुल वॉकिंग के लिए उनको कहा जाता है। तो उनके पास कोई चॉइस नहीं होती है सिवाय नेचर को देखने के लिए। तो अंदर में उनकी जितने अंदर में दबे हुए भाव हैं या कुछ भी जो दबा हुआ है वो सब बाहर आता है। जितने फ्रोजन इमोशंस हैं, चाहे वो बचपन के हों चाहे पिछले जन्मों के हों, वो सब सरफेस पर आते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो बहुत ही शांत और एकदम सॉफ्टली बात करते हैं वो भी बहुत ही वायलेंट हो जाते हैं, हिंसक रूप में हो जाते हैं। एक यूके के इनके फ्रेंड के बारे में बता रहे हैं कि वो पहली बार रिट्रीट में पार्ट ले रहा था और वो बहुत ही मीठा बोलता था। जब उनको मौन में रहे तो उनके पहली बार वो बहुत गुस्सा किए, और वो ढूंढ रहे थे मुझे, क्योंकि मैं ही उस रिट्रीट को करा रहा था, तो वो मुझे ढूंढ रहे थे कि वो अपना सारा गुस्सा जो पहली बार उन्होंने महसूस किया था वो मेरे ऊपर फेंके। पर बाय चांस मैं उस दिन नहीं गया था, मुझे कुछ अथॉरिटी का काम था तो मैं नहीं जा पाया था। मैंने नवनीत को भेजा था मेडिटेशन कराने के लिए। तो वो पहली बार जो गुस्से में आया था, सारा दिन मुझे ढूंढ रहा था ताकि वो अपने गुस्से को एक्सप्रेस कर सके, पर मैं सारा दिन उसे नहीं मिला। दूसरे दिन जब मैं गया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने एक पेपर में लिखकर मुझे कहा कि पहली बार आपने मुझे अपने गुस्से से इंट्रोड्यूस कराया है कि मेरे अंदर भी गुस्सा है, और आप ऐसे कैसे जान गए कि मैं आपको ढूंढ रहा था और आप आज नहीं आए। तो प्रदीप सर ने कहा कि ये कोइंसिडेंस था, इत्तेफाक था कि मैं नहीं आया था, और ये बहुत ही नेचुरल है। अगर तुम्हारा गुस्सा पहली बार भी आया तो ये बहुत ही नेचुरल है, और तुमने ही अपने गुस्से को डाइवर्ट करके अपनी ऑथेंटिसिटी को, अपनी वास्तविकता को छुपा कर रखा था। अब आप बहुत ही लाइट तरीके से अच्छे से आप जी पाएंगे। तो मौना हमारे विशुद्धि चक्र को साफ करने के लिए नितांत जरूरी है, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में इसका सबसे ज्यादा महत्व है। एक लेडी के बारे में बता रही थी, क्योंकि मैंने भी कहा कि 11 दिन के मौन में मैं काफी, मुझे रोना आ रहा था और मैं काफी बार रोई भी थी उस समय 11 दिन में। तो जब उन्होंने कहा कि एक लेडी थी जो पिरामिड वैली के रिट्रीट में पार्ट लिया था, तो वो सुबह से शाम तक के बुद्धा के स्टैचू के पास बैठ के रोती थी। सिक्योरिटी वालों को लगता था कि शायद उसे खाना का नहीं दे रहे हैं उसके लिए, या अपने घर की याद आ रही है, ऐसा क्या कारण हुआ है जो वो रो रही हैं।
तो जब सर से सिक्योरिटी वालों ने बात किया तो सर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे रो लेने दीजिए, इसकी इमोशन क्लिनजिंग हो रही है। और क्योंकि वाटर बॉडीज के पास जब बैठते हैं तो हमारी हीलिंग तेज होती है, तो वो उस बुद्धा के पास जो पॉन्ड था उसके पास ही बैठ के रोती थी, इसीलिए सिक्योरिटी वाले डरते थे कि कहीं वो कूद न जाए। पर 12 दिन के मौन के बाद जब वो पूरी तरीके से इमोशनली क्लीन हो गई, साफ हो गई, तब वो बिल्कुल एक तितली के समान एकदम लाइट और उन्मुक्त हो गई, फ्री हो गई। तो सर ने कहा है कि जब भी आप मौन रखेंगे तो हो सकता है आपको रोना भी आए, ये एक क्लेंजिंग प्रोसेस है। उसको रिएक्ट नहीं करना है, उसको सिर्फ विटनेस करना है, मतलब साक्षी भाव से देखना है, और जो भी इमोशन है उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। अगर रोना आए तो जरूर रोइए, कभी भी अपने इमोशन को सप्रेस नहीं करना है। थैंक यू सर। सर मौना के बारे में सभी लोग जानते थे, पर प्रैक्टिस आपके थ्रू ज्यादा हो रही है अब। But you are the one who is practicing, right? Yes, good. So that's why it's important when you have a group energy, it motivates. Yes, 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 sir. तो मेरे ख्याल से किसी को भी कुछ एक्सप्रेस नहीं करना है। जिन्होंने पहली बार रखा है मौना, उनको थोड़ा आके बताना चाहिए अब। हाँ शोभा जी, आप तो बहुत रखते हो, इनके में एक्सेसिव है। किसको मैडम? शोभा जी को। प्रणाम सर, प्रणाम सर। सर मैं अभी जो पहला आपने 22 दिन का कहा था उसमें भी मैं आखिरी के 3 दिन मौन रही थी, और अभी भी मौन है, और इससे पहले भी हमेशा रहती हूँ। एक बार मैंने 8 दिन भी पूरा कंटिन्यू रहा था, तो घर वाले थोड़ा चिल्लाते हैं, इसलिए फिर से मौन को तोड़ना पड़ता है। पर सर मुझे ना रोना वोना कुछ नहीं आया। हाँ, ये बात मुझे ये महसूस हुई कि मैं बहुत बातें करती थी, मैं बहुत करती थी, और अब मेरा बहुत कम हो गया है। अब मेरे को बात करने की दिल भी नहीं हो रही है सर। कोई भी, पहले नीता को मालूम है, कोई भी सेशन होता था तो सबसे पहले मैं हाथ उठाती थी और बातें करती थी। अब सर कुछ भी बात करने की दिल नहीं हो रही है, एकदम शांत हो गई है। ये फर्क आया है मुझे। Good madam, very good. Yes, So you practice more mount. हाँ, मौन करती हूँ सर। और करना है बोल रहे हैं, और भी करते रहो। हाँ करूंगी सर, करती हूँ। और 8 दिन का मौन था सर। शुरू में 1-2 दिन जिग हो रहे थे घर वाले, लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। पर उसके बाद बहुत शांत हो, बहुत मजा आ रहा था सर। बहुत शांत हो गया, इतना अच्छा लग रहा था कि महीनों रह जाऊं। बस पर नहीं रहना है। थैंक थैंक यू। हाँ रितु जी। हाँ, और सर ये पूरा आपका जिसने जैसे बोला है वो पूरा प्रैक्टिस कर रही हूँ। पर ये रॉ फूड का मैं एक्चुअली सुन भी नहीं पाई। 2 दिन से खाना तो खा रही, पर बीच में एक बार रॉ फूड का करी थी तो You just now said madam you have excessive, so just when I say okay, that means you just become mauna instantly. हाँ सर, सूट नहीं हो रहा है। Okay madam. वो कहना चाह रही हैं कि रॉ फूड में नहीं रह पाती, इसीलिए एक टाइम मील ले रही है। Your choice. Thank you. धन्यवाद। हाँ रितु जी। So I'm going to keep a clock maximum 60 seconds. Anybody speaks in more than 60 seconds, you have to be in mauna immediately. You have to practice. Okay, next. रितु जी We'll take. मैं कहूँ? यस। पहली बार मैंने 2 दिन का मौन रखा, और ये मैंने रियलाइज किया कि अगर हर कोई मौन प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है तो दुनिया के सारे दुख, दर्द, तकलीफें, परेशानियां मेरे ख्याल से 95% ऐसे ही खत्म हो जाएगी, और खुद का भी और घर का भी जो एनर्जी लेवल है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। बस दिस इज ऑल व्हाट आई वांट टू शेयर एंड से थैंक यू सो मच। थैंक यू। Yes, you are right. Mahatma Gandhi used to practice mauna one day. I think it's Monday. Every Monday he used to practice every week throughout his life. And in Jainism, mauna was given a great importance. Okay, so yes, that's the beauty. Thank you. Thank you. Yes. Thank you so much. भुवना जी। हाँ भुवना जी।
नमस्ते सर. Namaskar. நான் தமிழ்ல பேசலாமா? English or Hindi? सरी हिंदी பேச रहे. ओके. ना English. अब हिंदी में ही बात कर लेते हैं. हाँ. ठीक है. नहीं, हम तो अभी ज्वाइन किए हैं. एक्चुअली आपका 14th से 11th सेशन से हमने स्टार्ट किया और बहुत ज्यादा मेडिटेशन सब हम इतना नहीं लेकिन हमेशा ध्यान में थोड़ा बैठते हैं. हमें कुछ उतना कोई एक्सपीरियंस या कुछ नहीं होता. कभी बहुत अच्छा एनर्जी फील होता है, कभी कुछ फील ही नहीं होता है, तो थोड़ा डिप्रेशन हो जाता है कि क्यों हमें कुछ नहीं हो रहा है. इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो है आपके सेशन अटेंड करने के बाद पहले 3 मील्स a डे से 2 मील्स a डे से ही हमारा पेट भर जाता है और ज्यादा खाने का भी मन नहीं करता. और क्या कहते हैं, ये जो आप स्फटिक का वो बोल रहे, वो स्फटिक माला पहन करके ध्यान कर सकते हैं. स्फटिक मतलब क्रिस्टल, वही क्रिस्टल है ना वो स्फटिक जो है. Yes, you can do it. उसको करके कर सकते हैं. और हम जब ध्यान करते हैं तो कभी कभी हमारे यहाँ पे एक हेवीनेस फील होता है और यहाँ तक आके रुक जाता है. तो क्या है, उसके बाद बॉडी में एनर्जी नहीं होता. Everything is perfectly fine. All experiences are good. Continue meditation. देखिए मैंने आपको कितना एक्सपीरियंस के लिए कहा है कि आप लोग जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं बस विटनेसिंग करना सर बार बार बता रहे हैं, तो बार बार वो वाले क्वेश्चन मत पूछिए, है ना. इसीलिए हम ज्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि वैसे ही मिल जाता है. इतने लोग क्वेश्चन पूछते हैं. बस एक बार सर से बात करने का बहुत मन था कि डायरेक्ट इंटरेक्ट एक बार हो जाए. पत्री जी से हो गया, अब इनसे भी हो जाएगा तो एक मन को खुशी रहेगा. और इनसे इनका जो बात करने का है ना, उसी में बॉडी में एक एनर्जी फील होता है. तो ये बहुत अच्छा लगता है. इसलिए इनको कभी आज तक फर्स्ट टाइम लाइफ में ये जो है इस सेशन को जो है हम फॉलो करते आ रहे हैं. Okay, you follow in PMC. You follow PMC Tamil also, madam? तमिल YouTube में देखते हैं. हमको कोई लिंक चाहिए जो कि मेरे फ्रेंड्स लोगों को हमें आपके बारे में हम बात करते हैं तो हमको लिंक नहीं मिल रहा है कि तमिल में कैसे इस तरह का ये लाइव सेशन कहाँ पे होता है. Okay, कल से शुरू होता है तमिल कल में. से. ओ तो सर हमको प्लीज उसका वो लिंक चाहिए. हम कैसे वो करेंगे? आप लोग बुंदा जी उसमें है क्या ज्ञान भारत व्हाट्सएप ग्रुप में? नहीं. आप नंबर लिख दी ना चैट बॉक्स में, हम लोग जोड़ देंगे. सर आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं सारे ग्रुप्स में शेयर कर दूंगी. हो सकता है कुछ एक लोग तमिल वगैरह जानते हो. हम यहाँ साउथ इंडिया, हम कोयम्बतूर हैं, तो हम चाहते हैं कि मेरे फ्रेंड्स लोगों को हम इसके बारे में एक मिनट से बात करते रहते हैं. तो हम इनका जो है यूट्यूब लिंक ही तमिल का भेजते हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि वो भी हम जैसे लाइव स्ट्रीम अटेंड आप एक काम करिए ना मैडम, उसमें चैट बॉक्स में अपना नंबर और नाम डाल दीजिए. मैं ग्रुप में भी जोड़ दूंगी और सर का लिंक रोज हम डाल देंगे. ओके. थैंक यू मैम. कल से नया सीरीज शुरू करते हैं हम. ओके. नाइट में है. नाइट पे 9 to 11. ओके. वो तो बहुत कंफर्टेबल टाइम है. Okay, well, we will share it later. Okay. Thank you so much sir. Thank you. अच्छा मयूरी जी. Yes, one more. Yes. नहीं, ये पिरामिड जो बोल रहे हैं लोग, तो वो पिरामिड प्लास्टिक में सब आता है, तो उसमें कैसे एनर्जी रहेगा प्लास्टिक इसमें? I will share it in Tamil session, madam, because pyramid topic is also there in Tamil session. Oh, ठीक है. Thank you. हाँ मयूरी जी. थैंक यू बुगना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू. हाँ मयूरी जी. हाँ मैम, मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ, सातारा से. ज्ञान भारत के लिए तमिलनाडु, पुदुचेरी, असम, पूरा भारत से आता है ना मैडम. गुड. नीता जी का इतना सुंदर ट्रांसलेशन है, इसके लिए पूरा राष्ट्र जोड़ते हैं इधर. थैंक यू. हाँ मयूरी जी बोलिए. हाँ सर, आज जो डाइट फॉलो किया मैंने, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. और क्या मैं डेट्स ले सकती हूँ? हाँ मैडम, रॉ फूड्स बोला ना. ओके सर, आज मुझे मेडिटेशन आपको क्या भी चाहिए वो खा सकते हैं. ओके. सिर्फ कुकिंग नहीं करना है बस. दिन भर खा सकते हैं? हाँ, जब भूख लगे तभी. आधा पेट. यस, दिन भर खा सकते हैं. आधा पेट खाना है, लेकिन 6 लीटर जरूर पीना है वाटर.
6 Yes, लीटर yeah. वाटर पीने के बाद कितना जगह है? इसमें आधा पेट. ओके. आज मेडिटेशन में ना मेरे बेली बटन को बहुत गर्माहट महसूस हो रही थी. Very good, madam. It's good. You are progressing in meditation. यस, थैंक यू सर. सर मुझे ये पूछना था, मेरे 2 बच्चे हैं और वो बहुत तंग करते हैं, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो मुझे कंट्रोल करना है. बहुत 50% तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन थोड़ा निकल ही जाता है थोड़ा गुस्सा, तो मुझे थोड़ा टिप्स दीजिए. हाँ, don't control your anger, madam. सर आप बट कभी भी आपका फिर कंट्रोल नहीं किया तो उनको बत्ती मिलती. whenever you feel angry, you slap yourself. यस, myself. Yes, whenever you feel angry, you slap yourself. Then naturally your anger will go away. Because how many times you can slap yourself? You see, this is what happens. Your anger destroys you, not other person. That's why I asked you to slap yourself. Your own anger destroys you. So whenever you feel angry, so that is the time you step back and see why you are feeling anger. Because anger, most of the time, anger is because of helplessness. Okay, Yes, you are feeling yes. helpless. You are feeling helpless in that situation, especially with the children. You know, whenever you feel helpless, they are not listening to you. You tell them lovingly, you tell them friendly, once, Yes. twice, thrice. They are not listening. You feel helpless, Yes. right? But you have to understand why your children are behaving like that with you. So all your relationships are mirror reflections. So you look into your life that who you are not listening to. Maybe you are not listening to your inner consciousness. Maybe you're not listening to your own heart. So your children are reflecting that. Okay. So you step back and see what is the helplessness. And when you see, okay, I'm helpless because I'm not able to convince my own children. So then you will find creative ways to convince them. So when you find the creative ways to convince them, if you can able to touch their heart and speak to them in a loving, in understanding way so that they receive. So then naturally they listen to you. So this is all these relationships are an introspection for you to make a better person. Okay, do more meditation. Do more meditation. Naturally, your problem will be solved. Okay, thank you, sir. Yes. तो सर ने कहा है, अच्छा पहले इनके भी ले लेती हूँ. हाँ मीता जी. Yes, namaskar. These days had been very, very wonderful. And before you asked to go for silence, I was keeping silence from last Saturday. Last Saturday to Buddha Purnima, it came from within that I should maintain the silence and again liquid food that I have been carrying on as you suggested since last, I think, 2 weeks. So for the first time in life, I realized that we are here for a very short time. And this detachment thing has come very intensely within. And I felt very good that, yes, for a very short time we are here. Why to worry for so many things? So life is not so important here. We are here for a small time and we need not involve ourselves into all unnecessary things. And after the short time, we have to go to our own abode. So this feeling came to me from within for a very, very, very intensely. So I really enjoyed being into that feeling. Thank you so much for introducing and inspiring us to go for this Mona and this food especially. That helped us a lot and is helping. Still following the same diet as you suggested. Thank you. Thank you, madam. Thank you for sharing. So this is the stage 1 you have gone through. You have gone through the stage 1 where you felt we are not, life is very short. We are not important. Life is, there are better things to do. Why worry about unnecessary things? So that is a stage 1. You know, that is a stage 1 of the enlightenment. The stage 2 of the enlightenment is life is very, very important, right? You realize that life is very, very important. Life is very, very precious. So we have to celebrate each and every moment. That is a stage 2. Waiting for that. It will happen naturally. It will come. So, but on your part,
you can make an effort to be happy, like a laughing Buddha every moment. Okay, just look into yourself, what makes you happy or what stops your happiness. Look into it and start identifying the things. What gives you happiness? Focus on that. Like small things. Focus on that. Okay. Every child knows how to be happy, but when they become adults, the same child forgets. Right? If you ask a child, what do you want? The child will give a big list. I want this, I want that, I want to play in the rain, I want to go out, I want to spend time in the nature, I want to play with the dogs. I think the child has so many things, but the adults, they forget. What do you want? I don't know what I want. So the stage 2 also comes where No video. मेरे ख्याल से We got disconnected, I think. तो फ्रेंड्स, मैं जल्दी से आप लोगों को बता देती हूँ, उनके बच्चे कहना नहीं मानते थे। तो उसने कहा कि मैं क्या करूं, मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे रिएक्ट करना पड़ता है, डांटना मारना पड़ता है। तो सर ने कहा कि बच्चे और हमारे रिलेशनशिप हमारे मिरर होते हैं। आपके बच्चे अगर कहना नहीं मान रहे हैं तो आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करिए कि तुम अपने में क्या चीज को इग्नोर कर रही हो, उसको नहीं सुन रही हो। क्या ये तुम्हारी चेतना की आवाज है जो तुम्हें कुछ कहना चाहती है, या तुम्हारा कोई हृदय का कोई बात है जो तुम उसको इग्नोर कर रही हो, नहीं सुन रही हो? क्योंकि जो तुम नहीं सुन रही हो वही बच्चे रिफ्लेक्ट करके तुम्हें बताना चाह रहे हैं। तो जब भी कोई बात के लिए वो जिद करे तो बच्चों के हृदय में हाथ रख के प्यार से उन्हें समझाकर बात करिए, और अपने इंट्रोस्पेक्शन के लिए कि वो क्या चीज इग्नोर कर रही है, उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करिए ताकि आपकी ये टेंडेंसी जो है रिएक्ट करने की वो खत्म हो जाए। बहुत ही प्यारा मीता जी ने बताया कि मुझे मौन रखने, 1 हफ्ते से वो मौन में है, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि जिंदगी बहुत छोटी है और इतनी कीमती नहीं है, और तो हम जब इतनी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण नहीं है तो हम छोटी छोटी चीजों से अटैच क्यों हो जा रहे हैं। और हम यहाँ पर क्या और कुछ बोली थी उन्होंने, मतलब उनको लगा कि लाइफ में अटैचमेंट व्यर्थ है छोटी छोटी बातों पे होने के लिए। तो सर ने कहा कि बिल्कुल सही तुम जा रहे हो, तुम ये महसूस कर रहे हो, ये पहली स्टेज होती है एनलाइटनमेंट की, और दूसरी स्टेज आएगी जब तुमको पता चलेगा कि जीवन बहुत कीमती है, बहुत महत्वपूर्ण है, और तुम हर मोमेंट को एंजॉय करोगी। तुम्हें लाफिंग बुद्धा बनना है। अभी अपने आप में एक इंट्रोस्पेक्शन करिए कि क्या चीज है जो तुम्हें खुश नहीं होने दे रहा है, कौन सी चीज आपको ये रोक रही है। बच्चे खुश होना बहुत अच्छे से जानते हैं, पर हम जब बड़े हो जाते हैं तो खुश होना हम भूल जाते हैं। तो हमें पता लगाना चाहिए और छोटे छोटे कारणों से भी हमको ज्यादा से ज्यादा खुश रहना चाहिए, हैप्पी सोल रहना चाहिए। थैंक यू। यस सर। वर्षा पटेल। हाँ वर्षा जी। नमस्ते सर। नमस्कार मैडम। सर मैंने मौना 10 दिन किया था, विपश्यना किया है, और बीच में दो दिन 3 दिन ऐसे करती रहती हूँ। तो जब मौना से निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी किसी से बात ही नहीं करते, किसी से कुछ बोलना नहीं है। और कभी कभी ये भी होता है कि कोई काम करते हैं तो काम में कोई चीज मिस हो रही है, कुछ गलत हो रहा है, तो तुरंत इंट्यूशन होता है कि नहीं, ये कुछ गलत जा रहा है। और 1-2 क्वेश्चन पूछना था मुझे कि आपने अभी बताया कि एनलाइटन फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, तो उसके कितने स्टेज होते हैं? सिर्फ 2 स्टेज। 2 स्टेज। पहले स्टेज यू फील life is not important, and the second stage you feel life is very important. That's all. ओके। और दूसरा है कि ये जो आपका डाइट प्लान है वो मैं फॉलो करती हूँ। 6 मंथ से मैं 1 मील लेती हूँ, और वो भी रोटी सब्जी, और बॉडी पर मेरा बहुत रिड्यूस हो रहा है, तो उसके ऑप्शन में क्या कर सकते हैं? You don't want to reduce weight?
बहुत बहुत ही कम, मतलब ज्यादा कम हो रहा है। Okay, so then if you are reducing weight too much because of the diet, then you have to look into it. That if sometimes, it happens, like if you are not happy, then also the weight increases quickly or the weight decreases quickly. So look into your emotional aspect of it, Okay. because your body reflects on your what you feel deep down. Okay. Okay, and eat healthy food. Eat healthy food. And I have seen people who eat a lot, but still they never put on weight. Still they keep reducing the weight. And I have seen people who don't eat, who eat very minimum food, but they keep on putting weight. So I have seen both the extremes. It all reflects on your inner. पर सर मुझे वैसे भी खाना अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो बस ये जैसे जूस है, फिर रो फूड है, वो अच्छा लगता है, पर बॉडी रिड्यूस हो रहा है, इसकी वजह से फिर Okay, don't then. Sir, your voice is breaking, sir. नीता मैडम, आपका बहुत 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 शुक्रिया। Thank you, वर्षा जी, thank you. सर आवाज ब्रेक हो रही है, अभी भी आवाज ब्रेक हो रही है सर। तो इनका वेट कम होते जा रहा है, ये काफी समय से 6 महीने से सिर्फ एक ही टाइम मील खा रही हैं, तो से लगती है। खेम जी सही बोल रही हो कि नहीं? माही बताओ। यस 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 बिल्कुल। Anything short is always sweet, madam. Anything short is always sweet. इसके लिए सर मैं आप कम बोलता हिंदी है में अगर डांटेंगे भी तो वो इट विल बी म्यूजिक टू इयर्स। यस सर। नहीं आता मैडम डांटने का, क्या करूं? ओके मीतू किरण जी, सर I का know चेहरा इतना इनोसेंट है और बोलते इतना इजी है कि डांटना तो दूर में, डांट भी देंगे तो लेने वाले को ही ये होगा कि अरे यार क्या इस आदमी को डांटने को लगाया हमने। नहीं, नवनीत जी आएंगी तब बताएंगी कि वो डांटते हैं कि नहीं डांटते हैं। No, we don't speak Hindi. I don't speak Hindi with Navneet. Anyway, we speak English only because she doesn't know how to speak Hindi. नहीं, फिर भी आप इंग्लिश में भी उसको डांटते हैं कि नहीं डांटते हैं? क्योंकि लगता नहीं है कि आपको गुस्सा आता है। हाँ आते हैं मैडम, ज्यादा आता है। I was a very गुस्सा इसके लिए आता है, not because I'm helpless. In the class, some people they do some mischief, then I have to show my anger. Okay, so Meetu ji, you have 30 seconds time to share your experience. सर 30 आपकी क्लास करने के बाद बहुत ज्यादा चेंजेस आया मेरे में, तो अब मैं घर पे भी जो है आपकी क्लास नहीं करते उनको वो चीज समझाती हूँ मैं कि आप लोग भी ये चीज फॉलो करो तो अच्छा रहेगा। कल मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो उनको समझ आया। Perfect. Thank you very much. हाँ, you have finished in 15 seconds only, so it is very good. Keep it up. नीता मैम, लेकिन मैं आपको बताऊंगी एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। ऑडियो भेज देना। हाँ श्योर। हाँ किरण जी बोलिए। किरण जी नमस्कार सर। Yes मैडम। हाँ हेलो। हाँ बोलो आवाज आ रही है। राधे नीता मैम। हाँ बोलो ना मैम। ये मोना मेरे लिए चैलेंजेस था, फर्स्ट टाइम मोना रखा मैंने, बहुत चैलेंज था क्योंकि इल्नेस भी थे घर पे और उस दिन साइक्लोन भी आने वाला था उड़ीसा कटक में, तो बहुत चैलेंजेस था। और बच्चे भी फर्स्ट टाइम की मम्मी बोल कैसे नहीं रही है क्यों नहीं बोल रही है, मतलब किसिंग में कि आपको ऐसा करने से तो आप बोलोगे, आपको ऐसा करने से, लेकिन मैंने फिर भी मौन रखा। एंड उस दिन लिक्विड भी था, लिक्विड पे भी थी, तो इन बहुत कहा कि नहीं खा
खाओ खाना खाओ, लेकिन बहुत चैलेंज मैंने फेस करके भी मैंने मतलब किया, मौना भी रखा और लिक्विड पे भी रही। और कल 2 दिन से भी अभी मौन में थी, आज खोली हूँ मौन। बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम कम बोलना, एकदम स्वीट स्वीट। आज तो ऐसा लग रहा था वो कुछ बोलूं मैं। यस यस यस। मेरे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर, और बहुत अच्छा लग रहा है आपका रिट्रीट करके। मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स को भी भेजा है, सब बोल रहे हैं कि कब आएंगे कटक में, मिलेंगे सर से। सर व्हेन यू कम, पहले छत्तीसगढ़ तो आ जाए, फिर कटक जाएंगे। सर व्हेन यू कम। Okay, madam. Thank you. Thanks for sharing the experience. Yeah. Thank you. Continue. In spite of having children, she was into Mauna, so it was a good thing. और साइक्लोन भी आया था वहां पे। Yeah. हाँ, चंद्र राजन जी। Namaste, sir. Namaste, Pradeep ji. Yes, madam. It was a wonderful experience for me to keep Mauna for 2 days. Even Wednesday also I kept. All my house people were getting angry on me. What is this you're doing? You're not talking. Even though I kept Mauna, it was a very good experience for me. I am very chatterbox. I used to talk a lot. I have gained a lot of energy. Awesome. Thank you so much. Thank you so much. It was a great realization, madam. Yes. That you realize that you are a chatterbox. Yes. And you realize that it is good for you. It was a great realization. I always used to stick to the phone and call each and every friend and used to talk. No incoming call, no outgoing call, no phone, nothing. I was very happy. Okay, great. Thank you, madam. Thank you. Continue. Please continue. Yes, definitely. Thank you so much. हर्षना जी, वीडियो ऑन कर दीजिए। Hello. Can you hear me? Yeah, yes, I'm from madam. Chennai, sir. Yes. I did the Mauna for 1 day. This is the first time in my life, but I felt uncomfortable not speaking actually, because it's not a useful thing, used thing usually I do. But I felt I was getting agitated very fast, and I have a teenage girl who used to I get anger on her. So when I told I am going to be in Mauna for 1 day, she was very much happy. So Mama is not going to shout at me. So that day it was fine, but the next day my anger was little more, I think so. I felt little, for small things, my anger was fast, I thought. Naturally, madam, in the beginning when you practice Mauna, your husband and children will be very happy. That is natural for every family. Okay. Okay. But you will be unhappy because you are holding up a lot of emotions. So you will be unhappy in the beginning. But later on, the reverse will happen. Later on, when you become more meditative and you are very calm, then your husband and children, they become very much worried. Arey, mera BB enlightened ho raha hai, main kya idhar fas gaya, like that. They will start getting worried. Like before me, she will get enlightened. I will be left out. And then nothing will trigger you. Whatever they try to trigger you, you will be calm, cool, relaxed. So you will start enjoying the Mauna and they will be disturbed. So this is a natural cycle. Okay, so you practice more Mauna. Okay, and one more question, sir, can I ask? Yes, go ahead. Yeah, many people after coming to this meditation, I see many people, they wanted to get enlightened like that. But I feel what is wrong in this life? We can have more life, but it could be helpful for others. No, I don't know whether it's right or not, because I see many people, they want to get enlightened. So I think maybe I'm doing something wrong, or I'm not feeling the right thing. I don't know. So that's what I wanted to ask you. Okay, so your understanding of enlightenment means becoming a yogi, becoming quiet, becoming like a sadhu, detached from the physical world. Is that your understanding of enlightenment? That is wrong. Enlightenment means to be happy all the time with family, with friends, with all physical sophistications. So to enjoy life to the fullest without hurting others. That is enlightenment. Okay. Thank you, sir. Thank you. All right. So then I think 3 more questions. Yes, Sujata. Yes, sir. Namaskar, sir.
Namaskar, madam. Namaskar. Namaskar. Sir, for the first time I did Mona in my life and it was excellent. My experience is, sir, it was very excellent. It was slightly difficult for me, but I managed. तो सर बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा. फर्स्ट अचीवमेंट था 7 दिन का जब लेमन हनी वाटर पे. ना मुझे लगता है कि आई हैव अचीव्ड वन मोर थिंग, क्या 2 दिन मौना रही. तो सर इट वाज Good, madam. Good. very Life nice. feels so good. Life is Yes. so good, sir. I have started decluttering my house because we have a big house. तो Yes. कहीं I usually did decluttering, but फिर भी सर जमा हो जाता है कुछ कुछ. इतना बड़ा घर है, कोठी है 3 तल्ले की, सर कुछ कुछ जमा होता रहता है. So I have started from my kitchen and my bedroom. Yes, madam. तो It's good. ये भी बहुत अच्छा. Happy to hear that you are having the benefits. Thank you. Yes sir. सर डिटैचमेंट भी बहुत डेवलप हुआ है. ऐसे भी मैं बहुत अटैच नहीं रहती हूँ घर के लोगों से, या किसको थोड़ा तबीयत खराब हुआ है, कुछ भी हुआ तो मैं इतनी जल्दी अटैच्ड होके पैनिक नहीं होती हूँ, बट ज्यादा डिटैचमेंट अब मेरे में आ रहा है. तो Good, madam. Good. Wait for the other week. So we'll be practicing more Mona. रॉ Okay. फूड पे भी आज स्टार्ट हो गया सर, पूरा डाइट फॉलो की हूँ एंड आज रॉ फूड पे भी आ गई हूँ. तो नाउ डेज मैंगोज वगैरह है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ज्यादा. Okay. Where are you speaking from, madam? सर सॉरी सर, कटक उड़ीसा. Katak, Orissa. Okay. Good. Thanks for sharing, madam. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू एंड थैंक यू नीता जी, यहाँ लाने, इस फोरम पे लाने के लिए नीता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. Yes. थैंक यू वेरी मच. Okay. So next, Reena. Okay. So we will finish off quickly. We'll finish off quickly, and then I want to share some experiences. Yes. Good evening, sir. I have experienced this Mona has brought a lot of patience inside me. And one thing I just want to share, that first time I realized I have a friend who is dumb, and I realized how difficult it is for him to express all the things to other people. And one more thing that I just want to understand, that the people who lose their voice because of some accident or something like cancer, and does their throat chakra is blocked or for the lifetime, or it's it's just they are experiencing their karma? They are paying back for their karma, and most of the time it's payback of the karma. But sometimes the soul voluntarily chooses certain physical challenges to experience that dimension of life. All right. Okay. So sometimes the soul chooses to be born as a dumb and deaf. Most of the time, majority of the time, it is karmic. But sometimes the soul chooses, because once the soul is very evolved, once the soul is very old, the soul wants to try multiple permutations, combinations of living life. So sometimes it might be the voluntary choice of the soul also. Okay. So we cannot judge the situations. Okay. But just because they are dumb It's and all deaf, it's not karmic. like, I'm not saying it's all karmic. I'm saying mostly it is karmic, but it can be choices also in certain situations. But just because they are dumb and tough, it doesn't mean their throat chakra is blocked. It's not like that. Okay, sir. Okay. Thank you so much. So you can be yogis. Most of the yogis are mauna their whole life. It doesn't mean their throat chakra is blocked. Okay. So sir. when you practice mauna, for the people whose throat chakra is not in balance, it helps. But for the people who are already in balance, for them, there's no need. It just helps them, adds them. Okay, sir. Thank you. Yes. Thank you. All right. So Seema, what is this Seema? Seema. Oh, Yes. Seema iPhone. Huh? Okay. Seema. Sir, I'm from Yes. Katak, Odisha. Yes. And I did Mona on 26th Purnima, Bhut Purnima. And it was a great day. For the first time, I did
Mona, and on Saturday I did this week Mona, and it was only on liquid diet, and I felt very calm and relaxed. Sir, I did not talk on phone also, and I did not see the WhatsApp also that day, and I felt as if the whole day I should do meditation, and that also to sit quietly without music, and I wanted to do meditation the whole day. And I enjoyed the day very much, and it was totally a new experience in my life, sir, and felt more mindful and in doing things, and a lot of positive vibes and thoughts came that day, sir. And I did not felt hungry also, and I focused on the breath during meditation, sir. Sir, thank you so much for all this new experience, sir. And today I started taking the raw food, sir, and having very nice experience. Thank you, sir. Thank you, madam. So good. She has written down and she didn't waste time. It is good. Thank you. Good habit. So next, Arun, जल्दी बोलिए. Good afternoon, sir. Sir, I experienced while meditating to do some service. So I performed that service that came in my while doing meditation. Yesterday night I have done candle meditation. So something come towards me and I performed that service in the morning. So what is candle meditation, madam? So just I have read candle with the mon for 20-25 minutes. So that comes in my while meditating. I have thoughts that I need to do some service, and that I performed in the morning. For last 5 days meditation. Yesterday night I did this one, and then that thought. Maybe it's a cleansing of things from my. Okay, so you are speaking about Taraka, gazing into the candlelight. Yes. Okay. Fine. Right. That is not meditation, madam. But anyway, that's part of one of the yogas. So, but when we refer to meditation, we refer to only emptying the mind, eyes closed. Sir, anyway, it's an eyes closed only. In candle with candle, I closed eyes, and for 20-25 minutes, I did that meditation, and that comes in mind that I need to perform some service to cleanse my myself. So that that thing I performed in the morning. It's an service to the cow. Like in morning, I did some. Okay, madam. Okay, all right. Thank you. Donate to them. Okay, thank you. All right. Nazim. Namaste, sir. Namaste, madam. Don't keep asking the same question. I know you have the habit of repeating the same question. Ask something new. Okay, sir. बुद्ध पूर्णिमा से आज मैंने मौन रखा था. अभी मैं तोड़ रही हूँ क्योंकि 1 year से मैं ट्राई कर रही हूँ आनापाना, और साइलेंस पे रहकर वो बहुत इजी हो गया है. आपके गाइडेंस मुझे बहुत ही, इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग फॉर मी. थैंक यू सो मच, सर. Okay, so short and sweet. Thank you. Yes. Okay. Bharat. Namaste, sir, and thank you for this wonderful retreat. Sir, what I want to, I have done Mona for nearly 7 days in the last Corona for 4 times. But yesterday I could not keep the Mona. One day I kept and I could not do. But during this Mona time, all my painful memories, past memories, are coming up all the time. So what should I do, sir? I want to remove those memories, painful memories from myself. But instead, more Mauna, I'm madam. getting more. The answer is practice more Mauna. Okay, practice sir. more Mauna, the pains will automatically go away. Okay, thank you very much. Thank you, sir. Yes, next, final last question. Galaxy A70.
Okay. Hello. So yes. हेलो सर. हेलो हाँ, सर. yes मैडम. सर आपका नाम मैं गैलेक्सी है डॉक्टर क्या? मनीषा हूँ. नहीं सर, सर नहीं सर, मेरा नाम डॉक्टर मनीषा है. I've joined very first time I've joined this group and I'm feeling very nice. और सर मैंने है ना बुद्ध पूर्णिमा को I had done Mona, but I couldn't do Mona on Saturday, Sunday because of my duties. So I didn't experience any. But one thing I should share that I felt very gratitude towards the trees, nature. I had never felt that way. I felt very thankful to the trees. This feeling came very automatically. The feeling of gratitude. Okay, madam. Where are you from, madam? I'm from Jodhpur, sir. Jodhpur. Okay, good. So you've been meditating for a long, or this is the first time you're meditating? So this is my first time for such a long time. Okay. So are you a vegetarian? So previously I was non-veg. Okay. लहसुन भी नहीं खाते ना? आप लहसुन खाते हैं? नहीं सर, लहसुन छोड़ दिया है. पहले करते थे, अभी छोड़ दिया है. Okay, good. That's it. You become a vegetarian. You are a vegetarian. Don't eat garlic and keep doing meditation. Everything is going to be beautiful in your life. Not only the nature. बहुत अच्छा लग रहा है सर आपके साथ ज्वाइन करके. It's a huge blessing that I'm receiving and I cannot say words. मेरे पास words नहीं है. बहुत अच्छा feeling हो रहा है. It's very Okay, great madam. feeling. Thank you. We can feel it. Especially in the COVID session also, because there was all around very bad news. Everything was bad. That time I was very much. The brain was very chattering all the time. So वो जो शांति चाहिए थी मुझे. That's why I came into meditation, and this helped me a lot. Yes. Great. Thank you, madam. Thanks for sharing. Thank you. Okay. You see, there is 1.4 billion people in India, and how many people they get advantage of this meditation and group sharing. So you need only old souls come. Sometimes people ask, sir, why come all the people don't come into meditation? Only old souls come into meditation, and the rest of the souls, they might come, but it is just a relaxation exercise for them. They don't stick onto it. And for the person who is sticking onto this meditation path and to make their lives better, only old souls can do this. Okay. And it was a great joy to listen to all your experiences. So yes, it is working. I know it is working because it is. I've been doing it for many. Yes, sir, it is working, sir. Sir, it is working. I have many experiences. It's okay, madam. I'm not speaking to you. I'm not speaking to you. I'm speaking in general. Okay, sir. Okay. And thank you, ma'am. Thank you, ma'am. You are simply very great. बहुत अच्छा experience रह रहा है आपके साथ भी. Thank you. Okay, madam. The Thank you. vibrance. Yeah. So, I don't know. She's still in unmute. But anyway, I was happy because in the past, all this retreat was physical, because I can see them, I can monitor the progress, I can see the benefits, what they are going through. But virtually also, people are getting the same benefits, so that gives me joy. Right? So virtually also, people are going through a great transformation. I want to share many experiences, Madam, sorry to say, can you please mute yourself? Okay, sir. Thank you. Thank you. Harry? नीता जी, सब आपका गलत है. सर वो तो सर आपसे सब इतना बात करना चाहते हैं. They feel happy. No, I think she's excited and she wants to share. Yes, sir. So I was sharing that I was happy that yes, this virtual retreat is also working on. All right. So maybe in the future I will design something which is also more suited to virtual. Yes. All right, friends.
So now, Neeta ji, आपका final 2 words from your side. किसके बारे में सर? Overall experience of this. What is the difference between the first and the second? Your observation so far. The first retreat and the second one so far. पहले वाले रिट्रीट में मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊं ना सर, कि इनके फीडबैक्स बताऊं इनके ओवरऑल? तो पहली बार सभी लोगों ने जो डाइट में चेंजेस लाए और वेट भी रिड्यूस करे, अपने को लाइट फील कराए, और पहली बार सभी लोगों ने माइंडफुलनेस को अप्लाई किया। मैंने भी बहुत सुना था माइंडफुलनेस के बारे में, कभी कभी करती भी थी, पर सर आपके कारण अभी आज ये 1 महीने पहले जो हमने शुरू किया था सेकंड को, मुझे लगता है मैं काफी हद तक के माइंडफुल हो गई हूँ। और डाइट के साथ इस रिट्रीट में जो मौना आपने कराए हैं, मैं तो पहले भी कर चुकी हूँ मौना, पर बहुत फीडबैक्स आए कि मैडम हमने पहली बार लाइफ में मौना किया है। तो सभी लोग बहुत खुश हैं, और जितना भी मैं देख रही हूँ कि सबसे ज्यादा लोग मोटिवेट हुए हैं मेडिटेशन के लिए। पहले भी हम बहुत सारे विजडम शेयरिंग करें, पर पता नहीं इस रिट्रीट में ऐसा क्या है कि लोगों को मेडिटेशन से ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो गई है कि यस, यदि हम करेंगे तो हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। और मुझे तो बहुत बेनिफिट मिला है सर, माइंडफुल भी हो गई हूँ, बहुत खुश रहने लग गई हूँ, और काफी इमोशंस क्लीन हो रहे हैं, और इतने लोग जो मेरे साथ नए लोग जुड़े हैं, स्पिरिचुअल फैमिली एक बड़े रूप में ले ली है। तो मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ सर, और मैं चाहूंगी कि बस ये रिट्रीट हर थोड़े थोड़े दिनों के बाद हमारे चलते रहें। और मौना सबसे ज्यादा काम करा है लोगों के लिए, डाइट जितना किया उतना ही मौना भी इम्पोर्टेंट काम किया है। और सुबह से लेकर रात तक के सिर्फ और सिर्फ मैं व्हाट्सएप में इनके ग्रैटिट्यूड, इनकी लव एनर्जी को फील करती हूँ, जबकि पूरा क्रेडिट आपको जाता है, पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं सवेरे बैठ के पढ़ते रहती हूँ, क्योंकि उनकी डे टू डे उनकी लाइफ में जो प्रोग्रेस हो रही है वो मुझे ऑडियोज के द्वारा या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा भेजते हैं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। Yes, madam, that was a very good summary. And so you say the credit goes to me. Actually, the credit doesn't go to me. It just happens through me. That's all. You see, it is everybody is sincere. It is their sincerity and it is their practice. And I happen to share what I have experimented in my life. So whatever, all those things, this mauna, this diet and all the things, I've never read it anywhere theoretically. And it's more of my practice. It's my own experiment I did on myself many years ago. Okay. And I want to share today about my understanding and my lessons about money. Okay, so I'm not claiming that I know everything about money, but I did few experiments on money, so I want to share. Yes, you're interested? Yes, yes. Yeah, okay. So if people who are born in India, generally they have this understanding that if you are wealthy, then you cannot be a good person. Right? So this is one understanding generally normally people have. Or if you have too much money, then you cannot be a good person, number 2. Number 3 is if you want to progress in the spiritual path, you have to let go of the attachment of these materialistic things. So these are the general understandings people who are born in India have. So, but in the West, there's a different understanding. So I was also born in India, right? So I had the same logic. And so when I started coming into meditation and at the time, so I wanted to do more good things, right? So I wanted to donate everything, whatever I can. So what I did, because I was more of a savior, I had this savior attitude and I had this empathy, all those things was there because it was there in my sun sign, Piscean, right? So all these people are like that. So what I did, I used to, if somebody comes and says, anybody ask for help, I will do it. If I have in my hands, I will do it. If I don't have in my hands also, I will borrow it and do it. Okay, so I had this attitude.
For example, some of my distant relatives or friends or cousins, they come and ask, "Can you help me?" I don't know why they always come and ask me. There was never a sticker on my forehead that I'm always there available to help. Maybe it is my energy or maybe it is my learning. Everybody used to come and ask, "Can you help me?" So even though I don't have money, I used to take loans from the bank and give them. Right? Can you imagine taking loans from the bank or borrowing from other people? Mostly I don't borrow from other people. So I took the loans from the credit cards and banks and give them. My cousin sister's marriage or friend's marriage, they will ask. They might have huge property, but still they will ask for money, but still I'll give the money to them because somebody is asking money, I should give them. And even I learned that lesson that, you should give only if you have. If you don't have, then you don't need to give. So I started saying, it was a difficult lesson for me to say no. So I learned it in a hard way. And then came donations, right? Donations to the spiritual organizations. Again, the same pattern started happening. Whenever I go to some ashrams, some people might, ask. So I used to donate everything. And sometimes I used to also take loans and then donate. So while these things was going on, I was not comfortable with money. I always had issues with money. Like I was always in some kind of debt. I was not experiencing the abundance, right? Always there is some kind of debt, like there's some credit card debts or some loans or something was always there. So I used to earn money, but by the time I used whatever the money I earn, I spend double. I spend in the sense giving away to the people. So I used to think like if you donate to good causes, then it is good karma. Then I used to think, how come I'm helping so many people in need? Some people are really poor, I'm helping them, and I'm helping charities, I'm helping ashrams, but still how come I'm having this financial problem? According to law of karma, what you give should come back, right? But why I'm not getting back? So then I was introspecting, and then I understood the lesson. After a few years of trial and error, I understood that to donate is a particular art, right? So in Telugu, there is a proverb, Tanaku minchinadi danam. So what does that mean is, Tanaku minchinadi means whatever is in excess of you, only that can be donated. So I failed to look after my own self. I failed to look after my own needs. So I started ignoring my needs and my priorities, and I started focusing on donation. So again, according to the spiritual law, love thyself first, right? This is the statement of Jesus Christ. Love thyself first, and then love thy neighbor as you love yourself. So I went on to the second directly because I want quick enlightenment. Why bother taking care of me? I better take care of others so that I get more good karma, more faster enlightenment. So this lesson I learned. So it was a big learning. So for all of you who think that, if you don't look after yourself and if you don't honor yourself and if you can just do good things to others without looking after yourself, that's not going to help you. Okay. So the real charity is when you look after yourself first, feed yourself first, and then whatever is in excess of you, then you give it with joy. Because if you don't look after yourself and if you're not contented, then whatever you give is not joyful. You give, but you give feeling pity on others. You give, oh, that is a poor person, I need to help him. So there is a pity. So when you give it as out of pity, then that is not a charity. There is no good karma in that. And also even to the spiritual organizations, right? For the spiritual organizations, you may not give out of pity, but you feel like, yes, they need more than me, so I better give it. Then again, you are not learning the lesson that, okay, you need to honor yourself. You are putting others more than you. And you think when you are giving charity to the spiritual organizations, you feel like you are a great good Samaritan. There is no pity feeling, but you feel like you are a great good Samaritan. You feel you are a great soul. So there is a subtle spiritual ego. Okay. So this, I learned it in the very hard way. Hard way means I took some time to introspect, meditate upon it, go deeper. And then when I corrected myself, then there was a great joy. Then I understood
the right aspect, right? Look after yourself first, go for your needs, go for your comforts, and then whatever you give, you give out of joy, because you're already happy. You are not compromising anything. You are not sacrificing anything. You are already joyful. You are peaceful. You are contented. In that space, whatever you give, that is the energy. That is a joy energy. So that joy energy really helps others. And there is no expectations. Because there is no expectations, your joy multiplies. Okay, so this is one aspect. And also the other lesson I learned about money was, because of this savior attitude, I started taking more loans, and I keep paying on the credit card bills. And of course, you have to pay interest also, right? So when you keep paying interest, every time I pay the interest, I feel kind of a pain. Like, why should this hard-earned money? You know, you go to the job, you work hard, morning 9 to 5, and then that precious resource you are just giving away to the bank just because you've taken some loan. So I have been in debts for many years. And I went through the repayment process, the pain of repayment process. So I used to ask myself, why should I go through this money lessons? Why I'm having this much money lessons? I'm a meditator, I'm a teacher of meditation also. So why should I go through this money lessons? So then I got this understanding that money is also a great teacher on the planet Earth. Okay, because in the advanced dimensions, in the other dimensions, there is no money. Even on the planet Earth, after 20, 30 years, there won't be any money. There will be another form of energy exchange. On the Earth, there was no money before. There was barter system. But now the money is going to extinct. The money is going to go off from the planet Earth. So before the money goes off, I have to learn certain lessons. So then I became grateful. Right? Okay, money is going to go off from the planet Earth, so it's an opportunity for me to learn. So I became very positive. My attitude towards this money challenges became very positive. Before, I was having this complaining mode, like why this is happening, why I should have these problems. And the feeling was negative. The feeling was, when will I come out of these steps? Why I have to go through this? No? And okay, I was focusing on the lessons. Okay, what is the lesson I need to learn? But the feeling was negative. I was not accepting the situation. I was trying to find what is the lessons to learn without making peace with it. So the most important is, if you want to learn some lessons, you have to accept the situation. You have to accept the situation, and you have to be in peace with that situation. Then only you can focus on the lessons, right? This I have experimented in my life. So then, how did I deal with my debts? Is I told myself, yes, universe is giving me a beautiful opportunity. My soul is definitely smarter. I know my soul is smarter. So my soul would have chosen these experiences to learn something beautiful. So with that understanding, I made completely peace with the process. Okay, whatever it is, I go with the flow, because money is going to go away from the planet Earth in 30 years time. So there is no possibility of learning this lesson in the next lifetime. So better I utilize this. This is a very precious lesson. So first, then with that peace, with that understanding, I started I started observing how people are getting enslaved with this money, especially the lower middle class, or the people who are below the poverty line. They are the ones who are exploited with the money more. And the rich are also suffering with money, and the poor are also suffering with money. The rich are suffering because they are suffering with too much money, and they don't know how to safeguard it or whatever. And the poor is also suffering. So I saw the money is playing a very huge important role. And also the so-called spiritual people, they, not all the people, but some people, they go behind wealth and money, especially these corporate gurus, who charge exorbitant amount of prices. So money is playing in spirituality also. So I wanted to decode what is money and spirituality. So I was witnessing, and then I came to this understanding that yes, money is there to teach not only the normal person, but also money is one of the learning main obstacles for the enlightenment process also. Spiritually, if you want to grow, then I told you there are three things, right? Money, wealth, name and fame.
and then attraction towards the opposite sex. These three are big challenges every seeker has to face. So I said, okay, I'm facing this. Let me find out. You please translate until now, Neeraj. I will share next how I came out, what lessons I learned, I will share. तो मैं जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं बाद में बताऊंगी, सर का ही मैं बता दे रही हूँ। सर अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं पैसे से रिलेटेड। तो उन्होंने कहा था कि ये मनी से रिलेटेड मैं शेयर कर रहा हूँ कि इंडिया में जब पैसा नहीं होता है तब भी लोगों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, और जब किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है तब भी उसके लिए अच्छा नहीं सोचा जाता है। तो स्पिरिचुअल पाथ में भी ये माना जाता है कि आगे चल के अगर तुमको एनलाइटन होना है तो ये पैसे और संसारिक चीजों से, मोह माया से आपको छोड़ना पड़ेगा। पर वेस्टर्न कंट्रीज में इसकी अलग धारणा है, इंडिया की ये बात कर रहे थे। तो सर जब मेडिटेशन में आए तो वो बहुत ज्यादा दान पुण्य करते थे। उनका सेवियर मतलब उनका एक एटीट्यूड था कि मैं रक्षा करता हूँ, सब लोग की रक्षक जो होती है, और बहुत ज्यादा सहानुभूति थी लोगों से। और जितने भी इनके, क्योंकि इनके सनशाइन मतलब इनके जो सूर्य राशि है वो भी ऐसे ही है, दयालु होना, तो कोई भी इनको आके कहता था कि मुझे पैसा चाहिए, पता नहीं क्यों सभी लोग इनके पास आते थे और ये सभी को पैसे देते थे। अगर इनके पास पैसे नहीं होते थे तो वो उधार मांग के या लोन लेकर उन लोगों की मदद करते थे। सर ने कहा कि ये शायद मेरी लर्निंग थी या मेरी एनर्जी का कमाल था कि सभी लोग मेरे से उधार मांगने आते थे, यहाँ तक के जो जिनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होती थी वो भी मुझसे मांगते और मैं देता जाता था। पर धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि मैं बहुत ज्यादा कर्ज में डूब रहा हूँ या मुझे तकलीफ होने वाली है, तो मैंने बहुत ही बहुत मुश्किल तरीके से उनको ना बोलना शुरू किया। अब मैं आश्रम में भी डोनेट करता था हर चीज, यहाँ तक कि लोन देके भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में आश्रमों में दान करता था। तो उन्होंने सोचा कि जब मैं दान कर रहा हूँ इतना अच्छे से सब लोगों के लिए, बहुत अच्छे गुड कर्मास बना रहा हूँ, तो फिर मुझे पैसों की तंगी क्यों हो रही है, जबकि ये कहा जाता है कि जो भी दोगे वो कई गुना होके ज्यादा आपको मिलता है। तो ऐसी कौन सी लर्निंग है या क्या चीज है जो मुझे इतना देने के बावजूद मेरे पास पैसों की कमी है। तो इन्होंने अपने आप में इंट्रोस्पेक्शन किया कुछ सालों तक। उनको पता चला कि दान करना भी एक महत्वपूर्ण कला है। हमें तभी दान देना चाहिए जब हमारे पास जरूरत से ज्यादा हो। जब मैं अपनी जरूरतों को इग्नोर करके दान करता था तो मैं अपने आप को खुश नहीं रख पाता था। जीसस ने कहा है कि पहले अपने आप को प्यार करो, फिर उसके बाद अपने पड़ोसियों से प्यार करो। तो मैं शायद गुड कर्मा के भाव में आके या दूसरों की रक्षा करने और उनकी मदद करने के भाव में आकर अपने को ही, अपना ही ख्याल नहीं रखता था और मैं दूसरों को पहले मदद करने के लिए आगे बढ़ता था। तो ये हमें हमेशा रखना चाहिए कि हमें अपना ख्याल पहले रखना है, पहले खुद भोजन करना है, मतलब अपने आप को पोषित करना है, और फिर जब हम संतुष्ट हो जाएंगे और खुश हो जाएंगे तब हमारे में से जो दान निकलेगा उस दान में जॉय की एनर्जी मतलब खुशी की एनर्जी होगी। जब हम खुद ही अपने आप को खुश नहीं रखेंगे तो हमारी जो दान है वो एक सहानुभूति, एक दया के रूप में निकलेगी। वो एनर्जी अच्छी नहीं होती, वो आपके लिए गुड कर्मास नहीं बनाते हैं। तो आपको अपने आप को पहले संतुष्ट करना है, खुश रखना है, उसके बाद जब आपके पास पर्याप्त से ज्यादा है उसे दान करना है। हम लोगों के मन में ये भाव होता है कि हम स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में भी हम बहुत ज्यादा दान करते हैं, इसलिए नहीं कि हमको कोई सहानुभूति है, हमको लगता है कि ये संगठन में दान करना हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम अपनी चीजों को एक साइड में करके अपने आप को एक महान सोल समझकर उन ऑर्गेनाइजेशन में पैसे भेजते हैं। और मैंने भी यही किया था। तो पहले आप अपनी जरूरतों को पूरा करिए, अपने आराम को, अपने सुविधाओं को पूरा करिए, फिर उसके बाद देना शुरू करिए। मैंने भी वही किया। जब मैं बहुत खुश रहने लग गया, शांत रहने लग गया, तो मैं जो भी पैसे दान करता हूँ उसमें खुशी और एक पीस की एनर्जी होकर जाती है और उनकी मदद करती है, और उनकी मदद करने से उससे कहीं ज्यादा मुझे एबेंडेंस मिलती है। सेवियर क्रेडिट, जो मेरे में सेवियर होने का वो था, एटीट्यूड था,
उसके कारण ही मैं लोन्स और इंटरेस्ट लोन्स लेता था जिसमें मुझे ब्याज देना पड़ता था। मैं सुबह से शाम तक के काम करता और आके पैसों को मतलब ब्याज के रूप में भी चुकाता था। ये कई सालों तक के चला और मुझे लगा कि अब मुझे इस प्रोसेस को मतलब इस काम को एक अलग तरीके से समझना चाहिए। मुझे बाद में और ज्यादा समझ में आया कि जब मैं लोन लेकर ब्याज देकर दुख होकर उनको ब्याज चुका रहा हूं और पैसा दे रहा हूं, तब मैं एक निगेटिव एटीट्यूड में था। मनी एक टीचर है, एक शिक्षक है पृथ्वी पर। किसी भी दूसरे डायमेंशन में पैसा नहीं होता है, सिर्फ अर्थ में ही है। पहले हमारा वस्तु विनिमय करते थे, हम बार्टर सिस्टम के द्वारा देते थे। अभी पैसा है, कुछ सालों के बाद पैसा नहीं रहेगा। उस समय आगे कई भविष्य में चल के एनर्जी एक्सचेंज रहेगा। तब मुझे एक बहुत ही कृतज्ञता महसूस हुई कि पैसा इस दुनिया से विलुप्त होने के पहले मुझे कुछ चीज सिखाना चाहता है। तो वो जो सिखाना चाहता है उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूं और मैं एक पॉजिटिव मोड में आ गया हूं। और जब मैं पॉजिटिव मोड में आ गया हूं तब मैंने अपने सारे कर्जों को, अपने ऋणों को अच्छे से चुकाया। मैं समझ गया कि मेरी सोल स्मार्टर है, बहुत होशियार है। उसने यही सीखने के लिए इस लर्निंग को लिया है कि मैं शांत रहूं और फ्लो में बहते जाऊं। अब मैंने मनी से रिलेटेड ये सब चीजें जो सीख ली है, अब मुझे अगले जन्म में नहीं सीखना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं कि लोग कैसे मनी के गुलाम हो गए हैं। चाहे जो बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं वो भी सफर करते हैं, जो बहुत गरीब हैं वो भी बहुत ज्यादा सफर करते हैं। कई कोऑपरेट गुरुज हैं, जो कई हम लोग गुरु लोगों को देखते हैं, कोऑपरेट कंपनीज चलाते हैं। उन सबको भी मैं देखते रहता हूं और समझता हूं कि पैसा बहुत बड़ी रुकावट है एक स्पिरिचुअल पाथ में। जैसे मैंने पहले भी आप लोग को बताया है कि नाम, प्रतिष्ठा, सेक्स और पैसा, ये तीनों चीजें हमारे में ऑब्स्टिकल होती हैं। हमको अच्छे से समझना है पैसे से रिलेटेड चीजों को, तभी हम अपने स्पिरिचुअल पाथ में प्रोग्रेस कर पाएंगे। थैंक यू। Okay, so I was because I was paying a lot of interest. So one thing I learned is that yes, in Islam there is in Quran it is written that the money you get from others' interest is shaitan ka paisa, right? So in Islam it is forbidden. So I understood the depth of the meaning. Sometimes we are tempted to have easy money. We are tempted to have very, very easy money. But that easy money is like a shaitan only, because it's a negative energy. Because when somebody is paying you interest, they pay you with a lot of pain. And that pain is going to destroy your life. And that's why it is called shaitan. Because money is nothing but energy, right? So that pain energy is going to make your life suffer. So even all our greatest dharmas, right? All the greatest dharmas and religions, they always say, even Buddha in the Eightfold Path, he said, right living, earn the money in the righteousness. So money is an energy. So we should always earn the money in the right way. And when you earn the money in the right way, then the energy is positive. If you're earning the money through shortcuts or through illegal means, then that is a shaitan. So that's going to destroy your life. So that I started noticing, because when I pay the interest, I pay with pain. And I know that if I receive the money through shortcuts or trying to do other things, I'll also go through the same thing. So that lesson I realized. That's number one. And number two, once I asked Patriji, I was traveling with Patriji in India. I came to India, so I was traveling with him in car. So normally I ask him spiritual questions. I don't ask him any materialistic questions. But I don't know, because this money is also spiritual element is also there. So I asked him, sir, tell me something about money. I want to know, tell me something about money, about your understanding. Then sir asked, you are asking about wealth or you're asking about richness, the money? So I said, not about wealth. I know about wealth. Wealth is like all temporary and you're going to leave it here and we go back. I know about wealth, not the wealth. Tell me about money. So then
Patriji said, okay, I will tell you a very enlightened poet. He wrote a beautiful statement about money. I will tell you that. I said, okay, yes, sir, you can tell me. So the statement from this enlightened poet, what Patriji told me was, you know mustard? Yes, Mustard. yes. What do you call sarson? Sarson. Sarson. So there is no happiness. Okay, there is no happiness. This mustard amount of happiness. Not even a mustard amount of happiness is there when you're earning money. And not even a mustard amount of happiness is there when you're saving money. And not even a mustard amount of happiness is there when you're spending money. So this is the quality of money. So this is what Patriji told. So he was referring to another enlightened poet. So then it was like very interesting for me, because when I reflected upon it, actually money doesn't give happiness, right? When I was earning the money, when I was going to job, it was not giving me happiness. When I receive the money, it doesn't give me happiness, because the whole process of work to earn money doesn't give me happiness. And then I'm trying to save. Even in that saving process also there is no happiness, because always there is a worry. How do I multiply it? Or how do I safeguard it? How do I increase it? Or how do I judicially spend it? Always there is a worry. There is not even a mustard amount of happiness. And while spending, I started seeing my pattern. Whenever we spend, always from our childhood, we have this conditioning. Make sure it is judicious spending. Make sure it is worth what you are paying for. So every time you spend money, always this constant worry and thought goes on. Am I spending for the right thing? Is it really worth? And women are very good at bargaining, because this is the back of their mind. They want to get the maximum out of what they are giving. So really, when spending also, there is no happiness. It is so true. While earning, there is no happiness. While saving, there is no happiness. While spending, there is no happiness. So this is the very nature of money. That is very true. Okay, well, fine. So what next? So now I understood the nature of money. Then what is the lesson for me to learn? So now it was like focusing on what is the lesson. So then I read somewhere that this is the quality of a yogi with regards to money. Quality of a yogi with regards to money. So the quality of a yogi with regards to money is, when the money comes to a yogi, he will not feel excited or happy. And the money is going away from him, he will not feel sad or worried. So when the money is coming, he will be a witness, neutral. When money is going away, he will be a witness, neutral. Is it so? How difficult it is. When you are getting a lot of money, a certain kind of excitement will be there. But how is it like without any excitement, you just be neutral? And when everything is going away, you are not supposed to worry for a second and just witness it. So I said, okay, fine, let me also practice it. So even though I had a lot of debts, I started living like a yogi. The quality, because it's all about the inner quality, right? So I started living like a yogi. I started witnessing it. And you won't believe, the more I started witnessing, the more I understood the very nature of money, the more I started witnessing it. Then slowly, all the worry or all those things, all this while I was having from my childhood with regarding to money, survival, wealth, and all those things started disappearing. Completely started disappearing, and I started going into an abundant space. I started living in a space of abundance. And then I realized abundance is not something which happens because of the outer circumstances. Abundance is something which happens because of your inner. Abundance is the quality of your inner transformation, nothing to do with outside. You may not have a single penny in your pocket, but you can still be abundant. And you might be a millionaire, but inside you are a beggar. So these possibilities are there. So when I started living in abundance, then slowly the magic started happening. I started coming out of all my debts. And there was one day
I told myself, I think I learned all the lessons of money and that's it. I don't want any more debts. Even then, I had some debts, right? I had some like $50,000 debts, even in spite of, slowly. So I told myself, I declared that, okay, I think I learned the lessons of money. So this is the way it is. I'm going to be like a yogi. I'm going to witness it. And that's it. I learned my lessons. And also I told, I don't want this lesson anymore. It's getting too much. I don't want this lesson anymore. I learned it, finished. I want to experience something new. So when I declared this, you won't believe, within 3 months, my entire 50,000 debts got cleared and I was not working. So this happened in 2017. So 2017, I told that I want to serve more in abundance. See, now I'm feeling abundance. So I told the universe that I want to serve in abundance. So I want to finish off this experience. That's it. So within 3 months, everything started manifesting. And for many, many years, my father was so reluctant to support me financially because I brought some property on his name and he was reluctant to give it back to me. So for many, many years, he was not willing. But suddenly on his own, he came up and he says, I think I should give back what you have bought. So because I was living in Australia, so I cannot buy property here. So I bought on his name. So he said, okay, I'm going to give you the market price of whatever you bought. So he compensated. And then my mother, she said like, oh, once upon a time, you helped me a lot, like many years ago. So I know now you are in debt. So I feel like now I want to give it back to you because I'm having excess. So my mother also started contributing. And all the countries I traveled, and most of the countries I traveled, I teach meditation for free. And all the students, they went through a great transformation and they started sending me a lot of donations from many, many countries. Thousands and thousands of dollars of donations they started sending in. And if I add up everything, like as I'm receiving it, I'm clearing of all debts. So within 3 months, I completely came out. Can you imagine $50,000 just in 3 months, single shot going away? And the beauty is, I started getting more than what I need. So now the trouble began. If you have less money, then it's one kind of problem. If you have more money, then it's another kind of problem. So I started receiving more money than what I need. And then I started, since 2018, I started doing programs like retreats in Europe. So until 2017, I was doing mostly free programs. So 2018, my European organizers, they started charging money because they're organizers. They want to charge money so that they can take their own commission, and because it's their livelihood. And in Europe, it is not like India. In Europe, if you say it's a free program, nobody will come because they think it's not worth my time. So if something is free, for them, they cannot believe it. For them, free means something fishy, something manipulated. So for them, everything is an exchange, not like Asia. So Europe has a different mindset. If you say free program, nobody will come, zero will turn up. So my organizers have to charge money for the program. So they started charging money and they started giving me. And I was like, oh my God, what is this? I'm getting more than what I need. Now what do I do? So now there was a big trouble. So I was in Bosnia at the time. I was feeling a little disturbed because I'm getting a large amount of money for the programs I'm doing, for the retreats I'm doing. I'm doing retreats in Bosnia, I'm doing retreats in France, I'm doing retreats in Switzerland. I'm getting more and more money. So I was like, all these while I never charged for money, and now indirectly I'm receiving money for meditation. So what do I do? So then I sat in meditation in Bosnia. There was a very special place in Bosnia. It's called stone balls, the area of stone balls. So these stone balls were not from Earth. It is from another dimension. So it is like a satellites. These stone balls were satellites. They send information from the Earth to other dimensions. So I was sitting on the stone ball and I was meditating, and I just had this thought, I need some clarity. How do I manage with the excess money? I need some clarity. So I had this thought, and also I was not feeling comfortable that I'm charging money for my programs. So I need some clarity. So I sat in meditation, and within few minutes, there is something like a tablet was dropped in my mind.
Okay, so it says, it was like the inner voice suddenly. It was from the other dimension. It was the star beings speaking. So it said, money is coming to you for a reason, right? So there is nothing wrong in it. Accept it. You keep 1/3, 2/3 you give it back. There are certain projects which will happen through you. So whatever the money you charge, just keep it 1/3, 2/3 you give it back for good causes. So I was like, okay, fine. It makes me feel comfortable now. So then I started accepting. So when I started accepting, then there were so many projects which came through me. Like there was this pyramid research project, there was this herbal project, and building pyramids in Bali, building pyramids in Europe, and supporting so many organizations. So these things started coming up. And then my travels also increased. I started traveling to South America, Brazil, and remote corners of Africa, Eastern Europe, and Asia. So before that, if I have to go to a certain country, I used to think twice whether it is really needed for me to go, how much will be the tickets, is it bearable to me? But now I can go without thinking. Without thinking, I can go to any country on the planet Earth. So I was like, wow, this is the real abundance. So then I started, implementing this 1/3 formula. And the more I give, the more it is coming back. So then I started noticing this green money. Linda Goodman spoke about that green money. Whatever you give out of joy and happiness will come back to you multiple folds. So many years ago, I was giving, but nothing was coming back because I was not in joy while giving. But now I'm having so much in excess. I was giving and it is coming back multiple folds. So the more I give, the more I'm getting. So then I started really witnessing like a yogi, practical experience of witnessing. When the money is coming, just witness, say thank you. Before I had problems receiving money also. When I go to some countries and they give donation, I don't like to take because I have this programming that receiving money is bad, giving money is good. We have this conditioning. We should never receive. We should always keep giving. So I always ask Navneet to take the donation. When we both go, when it comes to somebody giving donations, I say, okay, please give it to Navneet. Because I used to have this feeling, oh, the meditation teacher should not receive the money. No. So then again, I learned the lesson that no, receiving and giving should be equal, right? When you receive with grace, receive with joy. When you give it with grace, give it with joy. Then only you be a witness, or else you cannot be a witness. Okay. So with this integration of receiving grace and giving with grace and joy and witnessing, really I stepped into abundance. A complete state of abundance where I'm least bothered about, even to think about money, I'm least bothered. So now the abundance is so much that it's not about how much I have, it's about the trust I have on the universe. So it took a complete cycle for me, from having this programming of a particular culture in India and then going through depths. And you won't believe when my depth started. When I was 17 years old. For my engineering, I took bank loan. So my debt started when I was 17 and it finished in 2017. So it took 18 years. For 18 years, I was constantly in debt, right? From the age of 18 till the age of 36. For 18 consecutive years, I was always in debts. And in these 18 years, I learned this lesson. Okay, so again, to quickly summarize. Yes, sir. Receive. Yes, sir. I'll summarize, then you can ask, right? So first, receiving, you receive gracefully without any hesitation. And when you give gracefully without any hesitation with joy, right? So when you give and receive with equal grace and joy, then the witnessing happens. Number one. And number two, money is going to go away from the planet Earth. The truth is, before it goes, it's going to teach a lot of lessons to the whole of humanity. And if you want to find somebody spiritual or not, trust me, give him some money, his real colors will come out.
give him a money test. If you want to know somebody is really spiritual or not, give him a money test. Then his real spirituality will come out. And point number 3 is, it is all about you being a yogi, right? Being a yogi means you trust. You trust, trust, trust. And in that trust only abundance comes. And the greatest truth is, in this pandemic, what the realization, money doesn't give you any joy. In spite of all the money you have, you cannot get happiness. You cannot get your single breath, even though you might have oxygen, but you cannot breathe. If the time is out, then you cannot breathe. So what we are doing with all those money? So if everybody starts thinking like this, just imagine, planet Earth is abundance. There is, you know what Mahatma Gandhi said? Mahatma Gandhi said, there is enough resources on the planet Earth for everybody's need, but not enough resources for everybody's greed. So this is the true statement. And it is very, very important that everybody should start focusing on their abundance aspect. You know, if you can live in abundance, then the joy of being on the planet Earth is really multiple fold. So these are some of the lessons I learned, and I can quote many other lessons, but time is running short, so I would just like to quickly summarize. Sir, एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? You can ask 3 also. जैसे सर आपने इंटरेस्ट के लिए बोला, तो अब जैसे हम लोग बिजनेस फैमिलीज में हैं, तो अब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है, तो हम बिजनेस दूसरों को करने के लिए इंटरेस्ट में देते हैं। मतलब जिनको पैसों की जरूरत है, तो वो बैंक में जाके हमसे लेते हैं, तो वी आर टेकिंग इंटरेस्ट एंड इट्स आवर साइड बिजनेस. So what is evil in that aspect? I will tell you a statement from Jesus Christ. No, तो सर वो भी तो कमाने के लिए ले रहे हैं ना? No, I will tell you this. I will tell you this statement. I will tell you this statement. Then you know the answer. Okay. Do you want me to say? Yeah. Okay. So the statement from Jesus Christ is: even a camel can enter a needle's eye. You know the needle? A needle has. Yes. Yeah. So even a camel can enter a needle's eye, but a businessman cannot enter the kingdom of God. This is the statement. Sir, ऐसे मत बोलिए. Okay. No, this is the statement of Jesus Christ. You know, what does he mean? So what does he mean is, a businessman is somebody who is always focused on money, how to multiply the money. He's always focused on materialistic things. So for a person who is always focused on materialistic things, how can he enter the kingdom of God? So he ruled out. He said, see, camel is such a huge animal, right? Camel is such a huge animal. He said, even camel can. There is a possibility camel can enter the needle's eye, but a businessman cannot. Ruled out. So that was his example. So when he says businessman, that means a person who doesn't do meditation. A person who doesn't do meditation and who is only focused on money. Okay, so I'll give you another. So there was another interesting example. There was one of the businessmen I met in my travels. So he has some 100 acres of land, and he gave that 100 acres of land to fishery farming, right, for the fisheries. He gets a lot of money. He gets crores and crores of money with that fishery. So now he came into spirituality. He bought that land before he came into spirituality. He was a businessman. So he bought that land and he leased that land. So the people who lease that land, they grow fishes, they grow the fishes and they butcher it and they sell it. So it is for fishery. So now he, after coming into spirituality, he was a little bit concerned. So what he started doing, he made a point, because he's a very wealthy man. So he has a lot of other properties. So this, whatever the resource he gets from this 100 acres, like it runs into some tens and hundreds of crores. So that money he will use for spirituality, so that there is no bad karma.
So this is what he thought. So all the money he received from that 100 acres, so he spent it for spreading meditation, giving to supporting the people, printing the books, printing the pamphlets, giving donations. He makes sure all the money is spent for needy people, like free operations, eye surgery, these, that, whatever. So charity, a lot of charity and spiritual things. And he's also a vegetarian. He became a vegetarian and he's also teaching meditation. A very nice person, right? He became vegetarian and he does a lot of good things. But he saw my karma workshop online somewhere. And then he got this biggest doubt in his mind. So he wanted to personally meet me, and then I happened to travel in that particular area. So then he came and met. And he has said, I'm in deep trouble now. I need clarity from you. I said, what is the trouble? I said, okay, I know this money is the money of blood, because whatever the money I get is from the blood of the fishes. And I know it is bad, so I'm using it for good. So will I still have any bad karma? And I asked him, what is your understanding? He said, before I thought it will neutralize, but now after listening to your karma workshop, it feels like, I don't know, I'm a little bit confused. So then I told him, sir, I'll tell you what the karmic things are. Whether you are doing right or not, you decide. I'm not going to give you an answer directly. See, karma is all for learning lessons. You do a lot of charity. That good karma will come to you for sure. No doubt you will get the good karma. But knowing something is bad, you are still doing it. So you'll receive that bad karma also. So you will have both bad and good in your account. So you have to learn certain lessons. So when you learn certain lessons, that karma is not there in your way. Just because I gave him that example, okay, you kill somebody and steal a lot of money, and you give that money to distribute that money to the poor people. Do you think your killing is justified? He said, I got the answer. So I said, okay, all this while in the name of, again, I'm doing spiritual service, I'm giving away money, a lot of things. So I failed to understand that some things are not right, so I should not do it. So again, this is an example of a businessman. You might say that I'm lending money to the interest. I get the money, but I use the money to do spiritual things. So the both are different. You have a certain lessons to learn from here, and you have a certain lessons to learn. Both are two different karmas. मतलब सर आपने जो बोला ये मुझे नहीं समझ में आया थोड़ा सा कि आप वो जो चैरिटी दे रहे हैं वो तो गुड कर्मा है, परंतु वो जो लीज पे दिया हुआ है फिशरी के लिए वो बैड कर्मा उसका बनाते रहेगा, दोनों न्यूट्रलाइज बिल्कुल नहीं करेंगे एक दूसरे को. No, but he has to learn the lesson, knowing that it is his land, and knowing it is he's using that. He's been an instrumental in the suffering of so many innocent beings, knowing that he is doing it so that he will pay back. He has to learn the lesson not to do that. See, mind is always cunning. Then I told him, it's very simple, right? You know that if something is bad, then why don't you give away that 100 acres land and buy somewhere else and do some farming? He said, no, that is a very prime property. See, mind is always cunning. So I think he made a decision. बंद कर दिया उसने. Yes. I said, why to take one more lifetime to pave this? I'll let go of this only. Okay. तो सर जैसे आपने बोला तो इंटरेस्ट अब बिजनेस में तो ये सब होता है सर, मतलब आप नहीं समझ पा रहे हैं मेरा कहना. जिनको हम देते हैं वो भी रिच हैं, they are not poor and they won't pay us in pain. Madam, in Islam it is ruled out. Rich or poor doesn't matter, ruled out. But you see, as a rule, I'm telling you the rule, but there is always exceptions. You have to consult your heart for the exceptions. Yes, sir. Understand the law of karma and consult your heart. That's it. Sir, I know very well about the Islam forbid about the interest, but we are not giving to poor. We are giving to rich one.
for their development of their business. So Okay, it is madam, our that right. is something you have to reflect, madam. Don't feel bad about it. No, sir. I want to learn everything and each thing about karma. That is why I'm asking, because I want to answer some. See, let me tell you, it is not about who you are giving to, but it is the very act which is against the spirituality. It is the very act. So if we have enough or more than enough money, so what should we do? We should use them. Okay, sir. I'm not going to tell you what to use that money for. See, it is an individual lesson. To be born a poor is not a big challenge, but to have money is a big challenge. I knew, when I knew, before in my life, I used to think all the rich people are bad people. They are so greedy people. They never think about others, they are so greedy, egoistic. This is what my impression was. But later on, when money started coming in abundance, I realized, Arre Baba, these rich people, what kind of a great challenge they are going through. Because for a poor person, he doesn't think twice to donate because he's already poor. There is nothing for him to lose. Whatever he has, he can donate. But for a rich person, he became rich by saving every single penny. Now it is double responsibility for him to make sure that money he has earned, and with so much hard work he earned that money, he doesn't want to waste it. So that's why the rich person always thinks twice before spending money, right? And I have done a lot of interesting observation about this Marwadis. Yes. The people who come from Rajasthan, the Marwad people, some of them are Jains. They are all business people. They are very good at business and they have very good ethics also. But for them, money is God. So why they have, and even you see all over the world, the United States, the most richest people are the Jewish people. They are the most oppressed one, and they climb the ladder to be the most richest. Similarly, when I went to Rajasthan and when I went to that desert area, I realized there's no agriculture there, no water, nowhere to survive, and these people have to be uprooted from their own families, from their own social fabric, and they went all over India. So money for them was very, very important. So I understand their cultural significance. But as Jesus Christ said, a businessman can never enter the kingdom of God. He ruled out. Jesus Christ ruled out. There is no possibility. He ruled out. So, but the same business people, if they come into meditation, they understand law of karma. They will start consulting their heart. They will always take the right decision. So a person who is in the path of meditation and who is in the path of ahimsa is not considered a businessman. He is considered a spiritual person. Okay. Now your doubt is clear, madam? Thoda sa hai. Abhi bhi, sir, my husband won't agree with me. No, you are not supposed to convince your husband. Your husband's consciousness has to convince him. You are not supposed to convince him. Okay, sir. Thank you. See, I'm not saying every business person should shut down the business. No, I'm not saying that. All I'm saying is a business person should do business. He should earn the money, but with the right consciousness. He should earn the money in the right way, and he should also spend the money in the right way. So earning should be in the right way. Spending also should be in the right way. Then, even if you're a billionaire, then it is perfectly fine. This is what Linda Goodman said. Linda Goodman said, it is nothing wrong being a billionaire. This is the statement of Linda Goodman. You can be a billionaire. You can be a multi-billionaire. There is nothing wrong in it. It is your right. As long as you follow the green money principle. She gave a beautiful formula, the green money formula. Linda Goodman. I'll share you what is that green money formula. I also experimented with that. The green money, what she said is, first is you do the labor of love. That is the first step. Whatever is your joy, whether it is business or employment or job or anything,
You do the labor of love. That is the first step. The second step, when you do the labor of love, you will get money more than what you need over a period of time. Eventually, you will get it. Number 2. And number 3, after fulfilling all your responsibilities, all your commitments, all your bills, all your debts, whatever, after fulfilling all the basic commitments and responsibilities, the excess money you have, split it into 2. The excess money, 50% you put it in your savings and 50% give it to others. Give it to others. Or if you don't have that heart to give it to others, at least spend it. It's better. At least spend it. But if you give it to others, you will get that good karma. So 50% you save it and 50% you spend it or give it away. So that 50% you give it away is a green money, which will come back to you multiple fold. So there is no harm in keeping 50%, but 50% at least give away. So this is Linda Goodman's formula of green money. I also experimented with that. So I combined both the star beings formula and the Linda Goodman formula. I combined it. What did you do? Give to organizations for good karmas, no? For good deeds, no? Yes, I support the research many work projects or pyramids, and there are many volunteers even in the pyramid organization. There are many volunteers. I support them, and so on and so forth. Sometimes things comes. You get intuition. This is what you need to do it. So you do it. You follow your intuition. But that is a very great challenge, madam. It's not so easy. Yes. That is why I'm asking you, sir. Navneet ne kabhi nahi kaha ki chaliye spend karte hain is baar. No, because we are in so much abundance. We don't need to buy anything. Everything is given to us. When we travel, our accommodation, our food, our hotels, you won't believe the clothes. And when I go for the haircuts, they don't let me pay for the haircuts. Not even a single penny they let me pay. Anywhere in any country. It's the same with Navneet also. So there is no need for us. Literally, there is no need. And see, this is where the quality of abundance is. When you are in that abundance, you attract more and more. Sometimes I still realize, when we go to Vietnam, Vietnamese people are very unique. They are very unique. If you have a chance, you should all go to Vietnam. Vietnamese people are so loving people. The Vietnam country was gone into war, right? So they have a lot of grief, but they want to come out of it. So everybody comes into meditation. In Vietnam, when we go, the crowd is at least in hundreds, 500,000. So that is the gathering in the hall, not virtually. So these people, they show the love and respect in very simple ways. People will bring you fruits, people will bring you socks, people will bring you shoes, people will bring you handkerchief. I got even shampoo as gift. Because these people, they are very practical. Oh, these things are needed for the master, so we give it. Sometimes we get so many gifts, you won't believe, because when we start the tour, we start from one country, and when we don't come back to Singapore, because our tours are 2 months, right? So once we go to Europe, we tour many countries for 2 months, or at 1.5 months, 2 months, then we come back. So we get so many gifts in one country. By the time we go to another country, we have to give back that gifts to another people. And we get so many gifts, and we keep giving, receive and giving, receive and giving. So receive in one country, give it in another country. Receive in one country, give it in another country. So because our baggage, by the time our baggage are 20 kilos, we cannot increase the weight. There is only little space. So this receiving and giving was in so much, there is so much joy. You feel that, universe is taking care of you. You are not doing anything. You just do the labor of love. You just do the labor of love and forget it. Universe is taking care of you. You are in abundance. And you will be a little bit surprised. I had billionaires as my personal drivers. I had billionaires driving me. You go to, I'm not speaking out of ego. I'm speaking up in the abundance concept, right? In the abundance concept, I go to certain countries. Like I go to, for example, I don't want to mention the names and countries, but I went to a particular country in Asia.
So the richest man in that country, like we have Ambani in India, right? So he is the richest man in that country, having multiple mines, and he's also the political influencer. He came personally in his own car, in his own he has a black cat security. The whole army is protecting him. So he came in his convoy to pick me up, right? And I went to another country in Europe. So he has, he's also one of the richest person in Europe. He has the flight company, right? He leases flights to many countries. He's the richest man in that country. So he personally came driving to the airport to pick us. And he asked me a question. So you left all your job and everything. So who is taking care of you and how is it things are happening? I told him, before I was working, I drive my own car. But now I'm doing God's work. So a billionaire is driving me. And he was like, stupid question. I got the answer. So this happens. This really happens. They do it out of love. They do it out of love. But I don't feel pride or great in that. In that moment, I feel the magic. In that moment, I feel the magic that when you surrender to the universe, you are literally abundant. Right? So I might be staying in his house for 2 days and he might be looking after me. That 2 days experience is enough to see that money can give you only comfort, but it cannot give you happiness. Because I have seen him, it's a palace. It's literally a palace. Everything sophisticated, but he's not happy. And that's why he has come into meditation. Okay. Okay, sir. Thank you very much. Sir, you can leave the meeting. It's already 7:15. Yes, I have a session. Thank God you reminded me. I almost forgot. I have another session. Mahi share. All right. Mahi ne share kar Okay, diya. madam. Before I want to close this topic, I just want to have. Do you have any loose ends in this, or do you have any doubts in this, or it's fine? So there are 2-3 questions in the chat box. मेरे ख्याल से माही कल पूछ लेंगे क्या सर? जी कल पूछ लेंगे. बहुत लेट हो गया. आपको फिर नेक्स्ट सेशन भी है आपका भी. It's okay. I have still 15 more minutes. I can take 5-10 minutes. Okay. पूछो माही. सर एक बैंक लोन इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो उस केस में is it the right thing or not? Okay, so when it comes to the banks, you see, there is it is part of the institution, right? So banks are part of the institution, and you are not exploiting any people, or you're not exploiting any emergencies. You're just being part of an institution. It is individual. I would say it is not a bad karma, but it is individual choice. Okay. सर बैंक का वो माही तुम इसलिए पूछ रहे हो ना कि कोई कर्जा लिया होगा? नहीं, इसमें क्वेश्चन ये है चैट बॉक्स में कि बैंक आल्सो गिव्स इंटरेस्ट फॉर योर मनी. एक तो ये क्वेश्चन है. एंड सर व्हाट अबाउट रेंटल इनकम? You see, as long as you are earning it in the right way. For example, if the actual rental is, suppose, $100, but you are exploiting the situation because the person is really in need of the house, and you are jumping up, you are jacking up the price to $150, that is exploitation. So there is a very fine line between what is the right earning and what is not the right earning. So you are exploiting the weaker people, not only the weaker people, you are exploiting the people who are ill-informed, or you are exploiting the people who are in emergency. So this is all exploitation which comes under the satanic energy, okay, the negative energy. But if you are doing the right thing in the right way, that's absolutely fine. Rental income, bank income, or any kind of income, which is like a fair, on a fair basis. You know what is fairness? Fairness is something which is good for the receiver and also for the giver. That is called fair. Okay, so if the receiver and the giver, they both are happy, then it is a fair deal.
But if it is not a fair deal, then it is exploitation. Then it is negative energy. Do you understand? I think I made it clear. Yes, sir. सिर्फ Yes, सिर्फ sir. एक जो वो लिंडा गुडमैन का आपने बताया थे, लेबर ऑफ लव का मीनिंग क्या होगा सर? Labor of love means what you feel good in your heart. Any job, any business which makes you soul happiness. That is labor of love. Yes, got it. Okay. All right, friends. I think we have covered up. Madam, you were asking about money for a long time, right? Yes, so, yes. So Because money attracts a lot. Money attracts a lot of challenges also, madam. Yes. नहीं तो सर कल बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे इन लोगों के, मैं आपको अभी भी बता दे रही हूँ. मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ कि मनी अट्रैक्ट, मुझे नहीं अट्रैक्ट करती है सर, पर No, I'm लोगों saying को generally बहुत, only. हाँ, Not yes. generally. So tomorrow you will answer everybody. Okay, friends. It was wonderful. Thank you very much once again. Amazing wisdom, sir. Thank you. Amazing. Thank you very much. Amazing, We will sir. see you tomorrow. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. तो फ्रेंड्स, मैं जल्दी जल्दी ट्रांसलेशन कर दे रही हूँ कि इस्लाम धर्म में ब्याज से पैसे लेने को शैतान का काम माना जाता है. तो सर ने सोचा कि क्यों वो शैतान कहा जाता है ब्याज लेना, क्या उसमें नेगेटिव एनर्जी होती है क्या? तो कई धर्मों में भी इसे गलत माना गया है कि किसी से भी ब्याज नहीं लेना चाहिए. मनी एक एनर्जी है, इसको सही तरीके से कमाना चाहिए, जैसे कि हमारे बुद्ध ने भी अष्टांग मार्ग में यही कहा है, सम्यक आजीविका, राइट अर्निंग, है ना. तो एक मिनट रुको भाई. हाँ, तो पैसा सर बोलते हैं, मैं तब ये पहचाना जब मैं लोगों को मदद करने के लिए ब्याज पे पैसे लेकर लोगों को चैरिटी देता था, और जब मैं ब्याज चुकाता था तब मुझे बहुत बहुत दर्द होता था. तब मैंने अंदाजा लगाया कि जब मैं दर्द से उस ब्याज को चुका रहा हूं तो वाकई वो ब्याज अच्छी चीज नहीं होती है. इसीलिए शायद इस्लाम में या कई धर्मों में इसको गलत कहा जाता है. एक बार जब वो पत्री सर के साथ इंडिया में ट्रैवल कर रहे थे तो सर से उन्होंने पैसे के बारे में पूछा, तो सर ने शॉर्ट में बता दे रही हूँ कि सर ने कहा कि मैं तुम्हें एक एनलाइटेंड पोएट के शब्दों को, स्टेटमेंट को मैं तुमको बता रहा हूँ, तो तुम समझ जाना कि पैसे से तुमको सरसों के दाने के बराबर भी खुशी नहीं मिलती. पैसों को कमाने से नहीं मिलती खुशी सरसों के दाने के बराबर, न आपको जमा करने से मिलती है, न आपको खर्च करने से मिलती है. तो सर ने कहा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि पैसा खुशी नहीं देता. मैं भी कमाता था तो शायद मैं वो जो काम करता था उसमें मुझे खुशी मिलती थी, मुझे सेविंग में और कमाने में खुशी नहीं मिलती थी. मेरे जो काम करना है वो वाले काम को मुझे खुशी देता था. जो लोग पैसे को जमा करते हैं उनको हमेशा एक चिंता होती है कि वो पैसे को कैसे बढ़ाएं और वो उनका पैसा सुरक्षित रहे, इसलिए वो खुश नहीं रह पाते. हमको बचपन से ये सिखाया जाता है कि किसी से पैसा लेना नहीं चाहिए, हमेशा पैसा देना चाहिए और पैसा सही चीजों के लिए खर्च करना चाहिए. ये जो हमारी कंडीशनिंग की जाती है, इसमें मुझे पैसे के स्वभाव के बारे में मालूम चला और मैंने अपने लेसन को सीखा, क्योंकि मैंने एक योगी के कोई आर्टिकल को पढ़ा था. उसमें लिखा था कि योगी पैसे को किस तरीके से रिएक्ट करता है. जब योगी के पास पैसा आता है तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता, कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, और जब पैसा उसके पास से जाता है तो वो जरा भी दुख नहीं करता. वो हमेशा पैसे के आने और जाने को सिर्फ साक्षी भाव से देखता रहता है. मैंने सोचा, मतलब प्रदीप सर कह रहे हैं, मैंने सोचा कि मैं भी इस चीज को प्रैक्टिस करता हूँ, मैं भी एक योगी के समान रहता हूँ. ये इनर क्वालिटी है योगी की, तो मैं योगी बन जाऊंगा. मैं भी विटनेसिंग करने लग गया, बिल्कुल भी चिंता नहीं करता था कि मैं कैसे जीऊंगा, कैसे रखूंगा. पैसे के बारे में मैंने सोचना ही छोड़ दिया. और तब मैं उसके बाद एबेंडेंस में, मतलब प्रचुरता रहने लग गई, उनके पास पैसा आने लग गया और पैसे में मतलब एबेंडेंस में रहने लग गए. तो सर कहते हैं कि एबेंडेंस बाहर की दुनिया से नहीं आता, हमारे इनर ट्रांसफॉर्मेशन से आता है. आप देखते होंगे कि किसी के जेब में 1 रुपए भी पैसा नहीं रहता, तब भी वो बहुत खुश रहते हैं. और
मैंने ये लेसन बहुत मुश्किल से सीखा था। मैं काफी नॉर्मल हो गया था, बिल्कुल पैसे के बारे में सोचता नहीं था, और मुझे लगा कि ये मेरे लेसन खत्म हो गए हैं, मैंने सब सीख लिया है पैसे के बारे में, जो भी मेरे लेसन थे। पर एक बार अचानक मेरे पास $50,000 का ऋण हो गया। अब मुझे उसे क्लियर करना था, जबकि मैंने जॉब भी छोड़ चुका था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे होगा, पर मैं बिल्कुल भी चिंता नहीं किया। तब 3 महीने के अंदर ये पूरा $50,000 का ऋण मेरा अपने आप चुकता हो गया, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे अपने प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता था, मेरे ब्रदर की भी मैंने हेल्प की थी, तो मेरे ब्रदर ने भी मुझे मदद की, और मेरी मदर ने भी मुझे मदद की पैसे देने में। और जो भी मैं क्लासेस लेता था, वो सभी स्टूडेंट्स जो मुझसे सीखते थे, वो भी मुझे प्यार के उपहार के रूप में पैसे देने लग गए। $50,000 का ऋण मैंने 3 महीने में चुका दिया, और मैं समझने लग गया कि जब कम पैसा हो और या ज्यादा पैसा हो, दोनों हालत में पैसा बहुत तकलीफ देता है, क्योंकि मेरे पास उस समय पैसे की प्रचुरता, मतलब एबेंडेंस बहुत ज्यादा हो गया था। इसके पहले तक के मैं फ्री सेशन लेता था, पर चूंकि यूरोप का एक माइंडसेट होता है कि फ्री में कोई भी सेशन करो तो नहीं आते हैं, उनको लगता है कि फ्री में जो भी चीज सिखाई जा रही है वो फालतू चीज है। वहां पे जब पैसे लिए जाते हैं कोई भी वर्कशॉप के लिए, तो उन्हें लगता है कि ये सार्थक है, तो वो आते हैं। तो मेरे ऑर्गेनाइजर लोगों ने मेरे सेशन के लिए पैसे लेने शुरू कर दिए, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा आए, और इसके कारण वो जो पैसे ऑर्गेनाइजर कमाते थे उसमें मुझे भी हिस्सा देने लग गए। और मुझे ये बहुत फालतू लगता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मेरा माइंडसेट अभी भी था कि मुझे किसी से पैसे नहीं लेने हैं। पर मुझे पैसे दिया जाने लग गया, और मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया। इतना पैसा हो गया कि अब मेरे लिए वो बोझ बनते जा रहा था। फिर मैं बोस्निया गया था। बोस्निया में एक स्टोन बॉल्स नाम की जगह है। कहा जाता है कि ये दूसरे डायमेंशन की है जगह, और ये अर्थ को दूसरे सैटेलाइट, दूसरे उपग्रहों से जोड़ती है, और वहां से इंफॉर्मेशन लेके आती है। तो उन्होंने कहा, जब मैं वैसे ही पैसे की तकलीफ से बहुत परेशान था, तो मैं वहां पे बैठ के मेडिटेशन करके मांगने लग गया कि मुझे कोई गाइडेंस दीजिए कि मैं इस पैसे को क्या करूं। मेरे पास पैसा सेशन के रूप में भी आ रहा है, और ऑलरेडी मेरे प्रॉपर्टी के रूप में भी है, तो मैं इसका क्या करूं। तो तभी एक बिल्कुल मेरे माइंड में आकर किसी ने एक इंट्यूशन या एक वॉइस के रूप में मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली कि जो भी पैसा आ रहा है उसे स्वीकार करो। 1/3 हिस्सा, 1/3 आप अपने पास रखो, और 2/3 हिस्सा आप अच्छे कामों के लिए दान करो। मैं स्वीकार करने लग गया पैसे को, और मैंने देखा कि जैसे मैंने पैसे स्वीकार करने लग गया, मेरे पास काफी पैसे आने लग गए। साथ ही साथ मेरे सामने बहुत सारे प्रोजेक्ट जिनको मेरे पैसों की जरूरत थी, वो भी सामने आने लग गए। मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट में पैसे देने लग गया। मैं पूरे वर्ल्ड में ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करने लग गया, अफ्रीका, ब्राजील, एशिया, सभी जगह। पहले मैं जाने के पहले सोचता था क्या वो जगह मेरे जाने के लायक है, पर उसके बाद मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, मैं हर जगह जाने लग गया, और एबेंडेंस मुझे भरपूर मिलने लग गया। और मैंने 1/3 का फॉर्मूला हमेशा रखा, 1/3 हिस्सा अपने पास रख के 2/3 हमेशा मैं दान कर देता हूँ। अगर आप अपनी खुशी से और अपने आनंद से किसी भी चीज को देते हैं, तो वो आपको मल्टीप्लाई होके आता है, और जितना मैं ज्यादा देता गया, उतना ही मेरे पास पैसे आने लग गया। पर फिर भी मुझे डोनेशन लेना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि अभी भी मेरे माइंडसेट में है कि एक स्पिरिचुअल मास्टर को पैसे नहीं लेना चाहिए। तो मैं उनसे कह देता हूँ कि नवनीत को दो। अभी भी मेरे मन में ये जरूर है भावना, परंतु ये बात सत्य है कि अगर पैसा लेना, अगर हम ग्रेसफुली, अनुग्रहित होके और खुशी से लेते हैं तब भी अच्छा है, जब हम पैसा खुशी से और अनुग्रहित होके देते हैं तब भी अच्छा है। ये रियल एबेंडेंस है कि पैसे के बारे में, ये रियल एबेंडेंस है कि पैसे के बारे में हमको कोई भी चिंता नहीं करना है, बल्कि इस अस्तित्व में पूरी तरीके से विश्वास करना है। जब मैं 17 साल का था, तब पहली बार मैंने ऋण लिया था दूसरों की मदद करने के लिए, और 18 साल तक मैं ऋण से, मतलब लोन से उधारी से दबा रहा। ये 18 साल, मतलब 36 इयर्स तक के मैंने ये सभी लेसन लर्न किए हैं, जो मैं आप लोग के साथ आज शेयर कर रहा हूँ।
अब मैं सिर्फ विटनेसिंग कर रहा हूं पैसे को आते और जाते हुए देखकर। एक समय आएगा जब इस पृथ्वी से पैसा विलुप्त हो जाएगा, उसके पहले पैसा मानवता को बहुत सी चीजें सिखाकर जाएगा। सर कहते हैं कि अगर कोई आदमी स्पिरिचुअल है कि नहीं वास्तविक रूप से, उसको टेस्ट करना हो तो आप पैसा दो, उसकी स्पिरिचुअलिटी सामने आ जाएगी। एक योगी जैसे ट्रस्ट करता है एबेंडेंस में, वैसे ही आपको भी करना चाहिए यूनिवर्स पे और एबेंडेंस पे ट्रस्ट करना चाहिए। ये जो पैंडेमिक चल रहा है वो अभी लोगों को ये सिखा रहा है कि चाहे आपके पास लाखों करोड़ रुपए हो, पर आप अपने लिए एक सांस भी नहीं खरीद सकते हैं। जैसे गांधी जी ने भी कहा है कि इस पृथ्वी पर बहुत एबेंडेंस है, बहुत रिसोर्सेस हैं एबेंडेंस की, पर उनके लिए जिनको जरूरत है उनके लिए एबेंडेंस पर्याप्त नहीं है। जो लालची हैं, जो ग्रीडी हैं, उनके लिए एबेंडेंट रिसोर्सेस पर्याप्त नहीं है। तो एबेंडेंस में जियो, जितना आप प्रचुरता में खुशी से जियोगे उतना ही आपके पास पैसा वापस आते जाएगा। मैंने जब इंटरेस्ट के बारे में पूछा था कि किसी ने मुझे चैट में, मेरे से ऐसे मजाक मत किया करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, किसी ने लिखा था कि गिव इट टू मी। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि मेरे पास करोड़ों रुपए फालतू पड़े हैं। एक पैसा जब हमारे पास जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो बिजनेसमैन मोस्टली दूसरों को बिजनेस में पैसे लोन पे इंटरेस्ट के साथ देता है। ये सभी लोगों के साइड बिजनेस होते हैं, मेरे हस्बैंड के भी हैं, तो इट्स नथिंग कि हम गलत कर रहे हैं। फिर भी मुझे डाउट था तो मैंने सर से पूछा, तो किसी ने मजाक में लिखा था कि मैडम गिव इट टू मी। तो मैं कोई करोड़पति नहीं हूं जो मैं आप लोगों को बांटते फिरूं। एनीवे, तब उन्होंने सर ने कहा कि कहा जाता है, बाइबल में कहा है जीसस ने कि ऊंट सुई के छेद में से भी गुजर सकता है, पर कभी भी जो व्यापार बुद्धि का आदमी है वो स्वर्ग के राज्य में नहीं आ सकता। अगर वो मेडिटेशन कर रहा है, वेजिटेरियन है और फोकस नहीं करता है मनी के ऊपर, तो तब वो आ सकता है। अपने एक फ्रेंड का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा था कि मेरे फ्रेंड के पास 100 लैंड की जमीन थी, वो बहुत ही पैसे वाला था, करोड़ों रुपए कमाता था। उसने फिशरी के लिए अपने 100 करोड़ की जमीन को लीज पर दे दिया था। और जब वो स्पिरिचुअलिटी में आया और उसे मालूम चला कर्म सिद्धांत के बारे में, तो उसने जो भी 100 एकड़ के फिशरी से जो लीज पे जो दिया था, उससे पैसा आता था, वो सारा लोगों को दान के रूप में देता था, लोगों के ऑपरेशन कराता था, अच्छी अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स की प्रिंटिंग कराता था, वेजिटेरियनिज्म को फैलाता था, खुद भी वेजिटेरियन बन गया था। वो बहुत अच्छा इंसान था, सभी अच्छे काम कर रहा था, पर वो उसकी जमीन एक गलत काम के लिए दी गई थी। एक दिन उन्होंने प्रदीप सर के कर्मा सेशन को सुना और उनके मन में उथल पुथल मच गई और प्रदीप सर से उन्होंने मिलना चाहा। तो जब सर उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ। मैं जानता हूं कि मैं जो भी पैसा दान कर रहा हूँ, लोगों की मदद कर रहा हूँ, चैरिटी कर रहा हूँ, उस पैसे में खून है, पर मैं उसे अच्छे काम के लिए खर्च कर रहा हूँ। तो एक तरफ तो मैं बैड कर्मा ले रहा हूँ जो लीज पे दिया हूँ, और एक तरफ गुड कर्मा कर रहा हूँ। तो क्या मैं न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा अपने गुड और बैड कर्मा को? मैं अब कंफ्यूज हूँ, मुझे बताओ। तो सर ने कहा कि ये जब कर्म सिद्धांत आप जानते हैं तो ये आपकी लेसन लर्निंग करने का समय है कि आपके गुड कर्मा तो है कि आप पैसे अच्छे कामों में खर्च कर रहे हैं, पर ये भी जान रहे हैं कि मैं गलत काम कर रहा हूं। तो आपको अभी से ही बंद कर देना चाहिए। क्या आप किसी की हत्या करने के बाद पैसे दान कर दोगे तो क्या हत्या का पाप आपका धुल जाएगा? नहीं। जो हमारे बैड कर्मास हैं वो बैड कर्मास रहेंगे ही। तो यदि आपका ये लेसन है कि आप पहले फिशरी के लिए दीजिए, फिर स्पिरिचुअल पाथ में आइए, फिर आपको मालूम चले कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। स्पिरिचुअलिटी में हम क्या करने आते हैं? हम अपने आप को राइटियस करने आते हैं, अपने को धार्मिक बनाने आते हैं। धार्मिक व्यक्ति वही होता है जिसको खुद के इनर गाइडेंस से मालूम चलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये अब आपकी समझ है कि आप समझिए कि आप निमित्त हैं, आप इस लेसन को पढ़ने आए हैं। तो अब आप इस लैंड को फार्मिंग के लिए यूज करो या किसी के लिए भी यूज करो, पर इसको फिशरी के लिए, खून बहाने के लिए मत दो। तो ये उसकी लर्निंग थी।
और राजस्थान का भी एक व्यक्ति का बता रहे थे कि वो बहुत पैसे वाला था, वहां पे अगर कोई स्पिरिचुअल पर्सन है और कुछ अच्छे कर्म कर रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे अहिंसा को फॉलो कर रहा है, छोड़ दो इसको। हाँ, लिंडा गुडमैन का बता रही हूँ कि लिंडा गुडमैन ने कहा कि पैसा कमाना गलत नहीं है और करोड़पति बनना बिल्कुल भी गलत नहीं है, पर ग्रीन मनी होना जरूरी है। तो ग्रीन मनी का अर्थ बताया कि जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम से आप प्यार करिए, लेबर ऑफ लव रहे। और दूसरा, जो भी आपको पैसा मिलेगा, आपको ज्यादा मिल रहा है, वो आपको जॉय से मिलेगा। मतलब जो भी आप खुशी से काम करते हैं उसके फलस्वरूप जो भी आपको पैसा मिलेगा वो खुशी के द्वारा मिलेगा और उसमें खुशी की एनर्जी रहेगी। तीसरा पॉइंट था कि अब आप जरूरत, आपकी जितनी जरूरत है आपके कंफर्ट और आपके नीड की, उतनी आप रख लेने के बाद जो भी पर्याप्त से ज्यादा है उसको 50% सेव करिए और 50% दूसरों को दे दीजिए चैरिटी में। तो जब आप किसी को चैरिटी में देते हैं तो उसको कहते हैं ग्रीन मनी। और यदि आपका दिल इतना बड़ा नहीं है कि आप पैसे दान कर सकें तो कम से कम उस पैसे को खर्च कर दें। अर्थात पहले आप अपने काम से प्यार करिए, मनी जो जॉय के साथ आ रही है उसको लीजिए, और तीसरा, जो भी आपके पास पर्याप्त से ज्यादा है 50% जमा करके 50% गरीबों मतलब नीडी लोगों के लिए, अच्छे कामों के लिए करो। तो ये जो हम दान करेंगे उस समय वो ग्रीन मनी कहलाएगा और आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये वियतनाम का भी उन्होंने कहा है कि वहाँ के लोग बहुत प्यारे रहते हैं, वहाँ के लोग उनको बहुत गिफ्ट देते हैं। ये जब 2 महीने के टूर पे जाते हैं नवनीत के साथ तो एक देश से दूसरे देश फिर तीसरे देश जाते हैं, तो वहाँ पे वियतनाम में इतनी गिफ्ट दे दी जाती है कि 20 किलो का वजन जो फ्लाइट में ले जाना अलाउड है, ये लेके दूसरे देश में जाते हैं और दूसरे देश वालों को वहां पे जाके दे देते हैं, क्योंकि फिर उन लोग भी गिफ्ट देंगे, फिर उन्हें आगे ले जाने के लिए इतना वेट वो नहीं उठा सकते। तुम कहने लग गए सर कि जब मैं लोगों से लेता हूँ प्यार से, अनुग्रहित होके रिसीव करता हूँ और फिर उतने ही ग्रेसफुली लोगों को देता हूँ तो मेरा यूनिवर्स में ट्रस्ट बढ़ते जा रहा है। और मैंने देखा है कि मैं हमेशा एबंडेंस में रहता हूँ। मेरे को लेने के लिए करोड़पति लोग भी अपनी गाड़ी में आते हैं और मुझे प्यार से लेके जाते हैं। ये मेरा ईगो नहीं है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप यदि यूनिवर्स के लिए काम करते हैं तो पूरा यूनिवर्स आपको एबंडेंस में रखता है। मेरे पास बहुत रिचेस्ट मैन लोग भी आके मेरे लिए गाड़ी चलाते हैं, मुझे लेने आते हैं। एक बार यूरोप में एक जो फ्लाइट कंपनी के ओनर थे वो उसको लेने आए थे एयरपोर्ट और अपनी गाड़ी खुद चला के लेके आए थे और सर को रास्ते में ले जाते पूछा कि आप सर जॉब नहीं करते हैं तो इतना जो ट्रैवल करते हैं, आते जाते हैं, लोगों को मेडिटेशन सिखाते हैं, तो आप ये पैसे कैसे मैनेज करते हैं? तो सर ने कहा कि जब मैं पैसे कमाता था तो अपनी गाड़ी खुद चलाता था, अब जब मैं यूनिवर्स के लिए काम करता हूँ तो आप जैसे करोड़पति मेरे लिए गाड़ी चलाते हैं। और उसने अपना सर पीट कर कहा, बिल्कुल सर सही कहा, मैं भी कितना फालतू क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो सर ने कहा ये उन लोग का प्यार है जो मुझे दिखाते हैं, अपनी गाड़ी में मुझे लेने आते हैं, ये एक जादू है, एक मेरी स्पिरिचुअल जर्नी का लेसन है कि जिसको मैंने सीखा है। मैं उनके घर जाके रहा और 2 दिन में ही मैं जान गया कि पैसा आपको कंफर्ट दे सकता है, आपको सुविधाएं, जरूरतें आपकी पूरी कर सकता, पर खुशी नहीं दे सकता। तभी वो करोड़पति आदमी मेडिटेशन में आया था। तो चलिए, थैंक यू। कुछ एक क्वेश्चंस रह गए थे, अब बहुत हो चुका है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं तो मैं एक ऑडियो बना के डाल दूंगी रात को। तो अब हम मीटिंग लीव करें क्योंकि अब मैं बहुत थक गई हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स। यस माही, बोलिए। बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जाइए, थोड़ा कुछ पानी चाय कुछ ग्रहण करिए। हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत जरूरी है। बस बिल्कुल आप जाइए, अब पर सर ने मुझे बड़ी दुविधा में डाल दिया है, थोड़ा सा दुविधा तो है, तुम समझ रहे हो, काफी लोग समझ रहे हैं। चलिए, लेट्स सी। ओके।